Namaskar. You're all requested to kindly keep your mobile phones either on silent mode or you can put it off on the switch off mode. For any assistance, you may please approach our volunteers placed in the auditorium. Om Namah Shri Yatirajaya Vivekananda Suraya Satchit Sukha Swarupaya Swamine Tapaharine. We are elated to gather here today at the Ramakrishna Mission, Delhi, in the blessed presence of the Holy Trinity, revered Swami Shantatmananda Maharaj Ji, revered Swami Sarvapriyananda Maharaj Ji, and other revered monks of the Ramakrishna order. Our humble pranams to all of you. Respected Saket Bahuguna Ji, Jyoti Chaudhary Ji, our dear devotees, our dear young friends, and our volunteers, a very good morning to one and all. I, Shatarupa Datta, am honored to welcome you all to the Youth Convention 2022. Today, the topic of our talk is Rebuilding India as envisioned by Swami Vivekananda. So, without any further ado, I would like to request revered Swami Shantatmananda Maharaj Ji, Secretary of Ramakrishna Mission, Delhi, to kindly commence the day with his blessings. Swami Shantatmananda Maharaj Ji is a senior monk of the Ramakrishna order. He is a well-known administrator and a spiritual mentor. He has been closely associated with the development of number of insightful value education programs based on the ideas of man-making and character-building ideas of Swami Vivekananda. It was under his leadership only Ramakrishna Mission Delhi launched the Awakened Citizen program in 2014, which is currently being implemented in more than 5,400 schools around the whole country. Maharaj Ji, with your blessings, we would like to start today's event. Om Namah Shri Yatirajaya Vivekananda Surai Satchit Sukha Swarupaya Swamine Tapaharine. Our very, very dear Swami Sarvapriyananda, other monks of this ashrama, and two youth representatives are going to address all of you briefly. And also the large number of youth you have gathered today for this wonderful thought-provoking session on rebuilding India. Now, before we attempt any task, maybe an artist, before he creates any drawing that way, or an engineer is about to build a building, all such persons, definitely they think about the theme, they have an idea what they are going to create, how it would look like. So, before attempting the task of rebuilding India, we should also think about what is the type of India we want to create, how it would look like, how it would be represented, and so on and so forth. Because we have a rider, we have chosen a very specific idea of rebuilding India, that is according to the vision of Swami Vivekananda. This itself might be challenged. Why should we rebuild India according to Swami Vivekananda? Probably other models can be attempted. But where he really qualifies as a person whose vision is so important is because, particularly from the time he started his Bharat Parikrama in 1886 till he laid down his life in Mahasamadhi in 1902, the one dominating thought was India for him. India, India, India. Nothing else. And this was palpably felt by many people.
Mahatma Gandhi, he visited Belur Math in 1921, and at the end of his visit wrote in the visitor's book, I have thoroughly gone through his works, and after reading them, my love for my country has grown 1,000-fold. A statement by no less than Mahatma Gandhi. The great Rabindranath Tagore wrote that if you want to understand, know India, read Vivekananda. Even his Western disciples, how he could influence someone like Sister Nivedita. She was a virtual tigress, she had her own mindset, her own ways of thinking. She was an extremely independent person. Simply she came and died in an attempt to serve our motherland, because we don't remember her much amongst our freedom fighters. But here is a person who contributed with her life for our nation. And one of his Western disciples wrote, our love for India gave birth in our hearts when we first heard the 5-letter word India from him. Miss MacLeod, probably. She writes that it's impossible to describe how much he could convey by the way he would pronounce that word. The great, glorious past of India, its culture, its heritage, its present degradation, its future glory, everything he could convey by the way he would pronounce that single word. So I don't think that we need to go beyond Vivekananda too. Not only that, we will critically, of course, during the discussions, our Maharaji will definitely put forth all these views, and you'll have enough occasion to debate and question and ask him and so forth. So particularly, after he came back in the year 1897, day and night, the one thought in his mind was our motherland, our motherland, our motherland. Because in 1886, when he went on a Bharat Parikrama, he was appalled by the poverty, illiteracy and the superstition in a country which was once hailed as one of the outstanding nations of the world. So obviously he was very deeply hurt. He could not bear it. So he has talked elaborately about rebuilding India, because all those ideas will definitely come for discussion today. But some of the things which he said then, and which are really, really relevant even now, is that the neglect of the masses, the condition of the masses, the poor, the laboring class, completely left out of everything, mired in poverty and illiteracy and so on. For centuries, even now it continues. Of course, all of you might know also, during this pandemic, the super rich category became enormously more richer. They amassed wealth during pandemic, whereas millions lost their jobs, lakhs lost their lives. It only goes to increase the rich-poor divide in our country. If we think about rebuilding India, probably this is something we should remember, how this can be reduced, what can be done to address this issue, which is so important, the rich-poor divide. All your GDP, etc. will make no sense. They will not convey anything unless the benefits percolate down to the level of the masses. So you see what he thought about the laboring class, the peasants, the farmers, the sweepers, all others who were in such condition then, now also they are same. There is hardly any improvement in there. What is the per capita income in India? We can't even mention, so low. And he also said again and again, the neglect of Shakti, the women power, that was one of the greatest reasons for our degradation, the country going down. Because in the Upanishads we also talk about the Gargis and Maitris of the Vedic times, and also the subsequent period how women were treated. And now what is happening today?
We talk about liberation, women's liberation, movement. In the cities it's different. But you go down, the real India is in the rural parts. The rural India is the real India. What is the condition? Millions are not even allowed to go to school and so on. I often say when women talk about their rights and they should be allowed to go at night 1 o'clock or 2 o'clock and even go and eat in restaurants and come back safe and all that, yes, they're all fine. But why don't you take up the cases? Why don't you work for those who are in villages? In several states, Haryana, Bihar, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, everywhere, millions don't have even the right to go to school, pursue education, even up to school level or even a little higher. So, even now the condition of women largely remains same, neglected. This is one area which he really said again and again, emphasized that we should attend and we should focus upon. Because he was again saying that each nation has specialities. And India, it's religion, spirituality. Without that, no progress, no advancement is possible. Because Maharaj can give probably a series of lectures on that because he's so well grounded in Advaita Vedanta. Only that what can remove all our differences, all our inequalities, everything. There will always be rich, poor, more capable, more wealthy, greater achievers and so on. These kind of distinctions would always remain in the society. But what would it really give that the sense of equality, the sense of empowerment? Only when we realize our extraordinary, glorious nature, which the Upanishads talk about, the Atman, the Brahman, our nature is immortal. Maharaj talked so elaborately about Satyam Jnanam Anantam Brahma, etc. yesterday evening. So, somewhere all that, if you keep all that apart and only take up the absolutely worthless Western model, which has failed miserably all over the world, only that external niceties, some comforts and some convenience and all that, if you think this is all that we mean by way of growth or development and all that, again we will continue to suffer for eternity. So, and then of course, even then he said, the real solution, the only solution is education. Education, the panacea for all evils. Again he emphasized how education is being denied, how it is in the hands of a limited few, and millions are left without that, even now. How many who come out of class 12 can pursue higher education? Of course, it's not only the academic. He talked about something totally a new idea of education. He talked about man-making, character-building education. First of all, we need to spread this idea of education. That should be our Sarva Siksha Abhiyan, etc. Some more schemes are there with the government of India, but really, it's still not reaching the levels or the reaching out to the poorest of the poor or the masses and so on. Because constantly, Swamijis are uplift for the masses, give them education. That will empower them. So, when you talk of education, it's not only just academic, it's also beyond that. The idea that it will produce children of tremendous character, personality, man-making, character-building education. And essentially he said education should instill in the students a tremendous sense of Atma Shraddha or self-belief. Because what's happening today? So many schemes are coming up. Atmanirbhar, this, that. Atmanirbhar, before that, one should believe that I'll be able to do it. Schemes are available. But if I don't have belief in myself at all, will I be able to avail of the schemes that are being talked about or that are being promoted every day or announced every day? So, first and foremost, this development of the tremendous self-belief that I am no less than anybody. Because the educational system, the methods, etc. are totally skewed towards the brighter, the academically oriented students. Can we bring about nuances? Because it's not the occasion to talk about that. We are already trying a new thing. We have launched a program called the Awakened Citizen Program, which has touched today 5,800 schools. And it has 1 million students have been touched through this program. So our idea is, can you, beyond system, beyond what is available by way of syllabus, by way of boards and all that, can we introduce anything in our system
whereby this tremendous self-belief in the students is generated. Because for 12 years, from class 1 to 12, you keep on hearing that you are no good, you are no good, you are less than the toppers, you can't compete with the computer talented students or computer toppers or language toppers or science toppers and all that. How do you think they will fare once they come out of the school at the end of class 12? Somewhere can we give through our system anything, this idea? You need not be academically great. Yes, it's necessary to have some minimum formal education, but you can do wonders even without being great academically. That idea. Because India lacks nothing. Enough water, enough natural resources, plenty of land, plenty of labor. What we need is citizens with that belief that we can do. Instead of everyone trying to gun for a few jobs that are available, everyone can become an entrepreneur. In so many ways, all that would contribute to the growth and development of the nation. So education is extremely important dimension, a domain which must talk about when we talk of regenerating our nation, our country. Of course, at the root of all, the most fundamental, Swamiji again and again said, 100,000 men and women fired with the zeal of patriotism, ready to lay down their lives. Because you see, Swamiji again and again said, the national ideals of India are renunciation and service. Intensify them along those channels and the rest will take care of themselves. Because all these, no system can give you, no system can bring about all these changes. We need soldiers as Swami Vivekananda, fired with the love for the motherland, ready to sacrifice our lives. Is it possible? Is it a too big an ask? Because unless we can create such a huge army of youngsters, Swamiji said, my workers would come from the youngsters. They will work out my ideas like lions. I have so much faith in them. Can we create such an army? Because all these ideas, uplift to the masses, all that would require, the participation of the youth, participation of the youngsters who are really up to it, who own that idea, who want to do it. Of course, in the process, they would also grow. Definitely, they will not be left behind. But then, are they ready to take the initial step? Because, it's a vast country. Their population is bursting at the seams. They have crossed 130 crores already. We cannot wait anymore. It's time. We are talking about the Amrit Mahotsav, 75 years of independence. What have we got? Go and see down in the rural areas, villages. What's happening even today? There's time for youngsters to come forward to raise to the occasion. Let's create an army. It's not, ideas are there. But we need men, Swamiji again said, we need people, we need youngsters fired with the zeal of patriotism, are ready to do anything. Probably, if you can work like that for some, say, 10 to 15 years, a totally new India would emerge. An India of Swami Vivekananda's dream, where, no one would starve, no one would have, the barest needs, necessities of life for everyone would be met. And beyond that, you would see a lot of peace, prosperity, happiness in our country. So let's hear Maharaji and also let us, take up this task in right earnest. Then only it's possible to do something. Thank you. Thank you, Maharaji. We are really grateful to you for energizing us every moment with your words and actions. We are graceful by the presence of our esteemed guest, Sri Saket Bahugunaji, who is currently acting as a consultant at NCERT and has been working towards the effective implementation of National Educational Policy 2020. Sir, we would like you to address us, please.
यहाँ पे सब युवा लोग हैं, तो सबसे पहले मैं एक नारा लगाना चाहूँगा, नंद के आनंद की जय विवेकानंद की। मैं कहूँगा नंद के आनंद की, आप लोग कहेंगे जय विवेकानंद की। नंद के आनंद की, नंद के आनंद की। जी। The keynote speaker and the chief guest of today, respected Swami Sarvapriyananda ji, Minister in charge of the Vedanta Society of New York, Secretary of the Ramakrishna Mission in Delhi, respected Swami Shantatmananda ji. First of all, I would like to extend my heartiest gratitude to this esteemed organization, Ramakrishna Mission, for inviting me to speak here and address you all, and for organizing this convention of youth. It's indeed an honor to be at the stage of an organization that was established by Swami Vivekananda ji himself, and an organization that has been working all over the world to spread the message of Ramakrishna Paramhans ji, Mata Shraddha ji, and Swami Vivekananda ji. So I'm elated to be here and also very nervous to be speaking in front of such gurus. So the topic of today's convention is Rebuilding India as Envisioned by Swami Vivekananda. The topic itself, as you would notice, says rebuilding. Why does it say rebuilding and not, a lot of people, couple of years back, a lot of people used to say nation building only. But here is a word which says rebuilding, because we innately believe, and this was the belief of Swami Vivekananda ji as well, that India was great. India had a rich past. And in order to build the India of our dreams, in order to realize the true potential of India, we need to look back. That doesn't mean that we want to copy everything from the past, but we need to take inspiration from the past and then move ahead, because that also gives us a lot of confidence to move ahead. And we also need to realize what made India great when India was great. सोने की चिड़िया अगर भारत को कहा जाता था दुनिया भर में, अगर दुनिया भर से लोग हिंदुस्तान की खोज में निकलते थे, इतना तक कि हिंदुस्तान की खोज में निकले हुए लोगों ने अमेरिका को ढूंढा, तो फिर वो क्या ऐसी चीजें थी जिसके लिए हिंदुस्तान को खोजा जा रहा था? क्या वो सिर्फ पैसा था? क्या वो सिर्फ मटेरियल वेल्थ थी? या वो भारत की स्पिरिचुअल वेल्थ थी, भारत के मॉरल वैल्यूज थी, भारत में जो जीवन पद्धति भारत के लोगों की आदिकाल से रही? ऐसे समय में स्वामी विवेकानंद जी भी स्वयं लिखते हैं कि जिस समय यूरोप में, अमेरिका में सिविलाइजेशन उस रूप में स्थापित नहीं हुई थी, उस समय भी भारतीय सिविलाइजेशन अपने एक चरम काल में थी। और यहां पर जिस तरह का आध्यात्मिक विकास, जिस तरह का हर तरह का विकास था, उसको अगर हम दोबारा पाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अपने इतिहास की ओर भी झांकना होगा और इतिहास से प्रेरणा लेते हुए आगे की ओर बढ़ना होगा। स्वामी विवेकानंद जी की क्या सोच थी? स्वामी विवेकानंद जी चाहते थे कि हमारा देश जो एक ग्रेट नेशन था वो दोबारा एक ग्रेट नेशन बने, और उसके जो बहुत सारे इम्पेडिमेंट्स और ड्रॉबैक्स हमारे सामने अभी हैं, और खासकर उनके समय में थे, क्योंकि उस समय हम गुलामी के कालखंड में थे, उनको ओवरकम करते हुए हमारा देश आगे बढ़े। लेकिन आगे बढ़ने के लिए उसको, जैसा कि आदरणीय स्वामी जी ने भी अभी कहा, कि युवा शक्ति जब तक आगे नहीं आएगी तब तक ये देश आगे उस तरह से नहीं बढ़ सकता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश वापस अपने स्वर्णिम काल की ओर जाए, वापस अपने ग्लोरियस पास्ट से इंस्पायर होते हुए एक डेवलप्ड, मॉडर्न और स्पिरिचुअल देश बने, तो उसके लिए आवश्यक है कि ये जो युवा शक्ति हमारे देश की है उसको जागृत करना जरूरी है। और स्वामी विवेकानंद जी तो चाहते थे कि देश के, इसीलिए उन्होंने पूरे देश में भ्रमण भी किया, बहुत सारे युवाओं से जाके वो लगातार मिलते थे। बहुत सारा ट्रेजर स्वामी जी ने हमारे लिए लिखकर रखा हुआ है जिसको हमें पढ़ने की आज आवश्यकता है। और रामकृष्ण मिशन की एक बहुत बड़ी भूमिका है, पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में आज उनके विचारों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, पुस्तकों के माध्यम से, पब्लिकेशंस के माध्यम से।
तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम युवा न केवल उनके विचारों को पढ़ें बल्कि उनके विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करें। हो सकता है कि हम सोचें कि हम अध्यापक हैं, हम शिक्षक हैं, हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, हम जाकर क्या समाज में परिवर्तन करेंगे, लेकिन नहीं, हर व्यक्ति का इस देश को परिवर्तित करने में, देश के विकास में हर व्यक्ति का योगदान है। अगर मैं एक शिक्षक हूं और शिक्षक के रूप में अपनी भूमिका को ठीक तरीके से अपना रहा हूं, अपने विद्यार्थियों को सही शिक्षाएं दे रहा हूं, नैतिक मूल्य सिखा रहा हूं, तो वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है भारत को रीबिल्ड करने में। अगर मैं एक विद्यार्थी हूं और अच्छी पढ़ाई कर रहा हूं, अपने आसपास के समाज के लिए भी कुछ सोच रहा हूं, तो वो भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और इसलिए मुझे लगता है कि हम सभी को किसी भी फील्ड में हम लोग हों, whatever field of life, whatever walk of life we are working in, whatever vista of life we are working in, we should think about the country and we should keep the nation first and keep doing our duties in the way that we do in the best possible manner, inspired by the vision and ideas of Swami Vivekananda ji. That can lead this country to prosper, because when everyone start doing their work, of course this country will progress in great measure. स्वामी विवेकानंद जी का अगर आप स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी से हम सभी लोग परिचित हैं, हम लोग जानते हैं, so I'll not repeat that, लेकिन उनकी पर्सनालिटी को भी अगर आप देखिए कैसे वो आज के यूथ को इंस्पायर करते हैं। एक मॉन्क जिन्होंने सन्यास लिया हुआ है, लेकिन अगर आप स्वामी विवेकानंद जी के 1893 के भाषण को देखिए तो जब पहले तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल, उनका प्रेजेंटेशन लेवल, उनकी लैंग्वेज पे कमांड, विदेशियों की भाषा में भी, उन्हीं की भाषा में, अंग्रेजी में ही उनको अपने धर्म, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति के विषय में उस बात को इतने कॉन्फिडेंस के साथ एक विदेश की भूमि में रखना, वो ही अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि उस समय, आज के दौर से अगर कंपेयर करें तो बहुत अलग सिचुएशन है, लेकिन उस समय भारत गुलाम था अंग्रेजों का। उस समय एक युवा एक ऐसे देश से आकर, जो देश किसी दूसरे देश का गुलाम है, जिसकी इमेज अंग्रेजों ने अपनी राइटिंग से और इससे इस तरह सपेरे और गडरियों के देश की बनाई हुई थी, उस देश का एक व्यक्ति इतने कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात को जाकर उन्हीं लोगों के बीच में रखता है और अपने देश के धर्म और संस्कृति के विषय को उनके बीच में रखता है, अपने देश की महानता को उनके बीच में रखता है, तो कितना बड़ा अचीवमेंट है। और पहले ही शब्द विवेकानंद जी के उस शिकागो के भाषण में जब वो कहते हैं सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। क्यों? भारत में किसी अनजान व्यक्ति को, आप कोई छोटा सामान खरीदने भी जाते हैं, आप ऑटो में भी ट्रैवल करते हैं, तो आप भी उन्हें भाई साहब, भैया बोलते हैं। लेकिन वहां पर उस मटीरियलिस्टिक सोसाइटी में जब स्वामी विवेकानंद सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका करके एड्रेस करते हैं, तो उन लोगों के कहीं ना कहीं उनके दिल को वो बात छू जाती है। और यही तो भारतीय सभ्यता संस्कृति का मूल है कि हम हर व्यक्ति से जो कनेक्शन है, हर व्यक्ति में जो ईश्वर की एक मैनिफेस्टेशन ऑफ द ऑलमाइटी जो हम लोग देखते हैं हर व्यक्ति में, उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से दिया। और उसके बाद तो हम सभी लोग जानते हैं कि कैसे स्वामी विवेकानंद जी से पूरी दुनिया उनके विचारों से अवगत भी हुई और उसके बाद उनको हर जगह बुलाकर उनके विचारों को समझने की चेष्टा सब लोगों के द्वारा की गई। आज हमें सौभाग्य मिला है कि हम आदरणीय स्वामी जी, स्वामी सर्वप्रियानंद जी के विचार सुनने को यहाँ पर आए हैं। लेकिन उससे पहले, क्योंकि हमें ये यहाँ पर अपनी बात रखने का मौका मिला है और वास्तव में स्वामी विवेकानंद जी के विचारों पे हम यंग लोग कैसे काम कर सकते हैं, जिस भी फील्ड में हम काम कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि मैं एक विद्यार्थी रहते हुए, स्टूडेंट रहते हुए, मैं एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा जो स्वामी विवेकानंद जी के विचारों पर काम करती है और विवेकानंद जैसे और विवेकानंद जी से इंस्पायर्ड युवाओं को तैयार करने का काम करती है। तो स्टूडेंट्स के बीच में रहते हुए मुझे कुछ काम करने का सौभाग्य मिला और विद्यार्थियों को और युवाओं को मिलने का, उनसे बात करने का और उनके साथ काम करने का मौका मिला। तो यही चीज स्वामी जी के विचारों के आधार पर
हमने यही चीज़ सीखी कि हमारे आसपास जो समस्याएं हैं, एक तो उन समस्याओं को देखना समझना बहुत आवश्यक है, लेकिन उसके साथ साथ उन समस्याओं के समाधान क्या हो सकते हैं, व्हाट कैन बी दी पॉसिबल सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स दैट वी सी ऑल ओवर, उनके बारे में विचार करना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि समस्याएं तो सभी लोग गिना सकते हैं, लेकिन उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस खोजना ये बहुत जरूरी है। और जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने हमेशा कहा कि हम अपने अंदर की स्ट्रेंथ को हमें पहचानना चाहिए। वो तो कहते थे स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। हमारे अंदर की जो इन्नेट स्ट्रेंथ है, खासकर यूथ की जो इन्नेट स्ट्रेंथ है, उसको हमें रियलाइज करना बहुत जरूरी है। तो हम बहुत सारी समस्याएं बहुत छोटी हो जाएंगी, बहुत सारी समस्याओं की बहुत सारे समाधान हम खोज पाएंगे। और उन समस्याओं के लिए हमें संघर्षवान भी होना पड़ेगा। हम स्टूडेंट हैं, हमारी कॉलेज में, हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। व्हाई डोंट वी टेक स्टेप्स कि उनका कोई सॉल्यूशन निकले? क्यों नहीं हम जाके कोई उसके लिए कुछ प्रयास करते हैं? तो इस प्रकार का प्रयास, इस प्रकार के बहुत सारे प्रयास करने का सौभाग्य मुझे मिला विद्यार्थी रहते हुए, विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थियों के साथ काम करने का। और सबसे मेरे लिए गर्व की बात यह है कि विवेकानंद जी के विचारों से इंस्पायर होकर एक ऐसी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मौका मिला, तो वो एक बहुत बड़ा मुझे लगता है सौभाग्य है। मैं बहुत अधिक समय न लेते हुए, क्योंकि आज हम आदरणीय स्वामी सरप्रियानंद जी से यहाँ पर उनके विचारों को सुनने आए हैं, सो आई विल नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। बस मैं यही आप लोगों से कहना चाहूँगा कि वो जो नरेंद्र से विवेकानंद बनने की जो यात्रा है, उसको निश्चित रूप से हमें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, अपने अंदर आत्मसात करना चाहिए और उसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में लाना बहुत जरूरी है। सिर्फ पढ़ने से नहीं, बल्कि अपने जीवन में हम उसे कैसे उतार सकते हैं, इसके बारे में हमें जरूर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। और मैं आप सभी लोगों को यही शुभकामना देता हूं कि स्वामी विवेकानंद जी के विचार आपको आपके जीवन में आए और आपके जीवन में परिलक्षित हों। मुझे यहाँ पर बोलने का सौभाग्य मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रेरणादायक शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। I now call upon our next eminent guest, Jyoti Chaudhary ji, to share a few words with us. Jyoti ji is a former Joint Secretary of the Delhi University Students' Union, DUSU, and a very prominent representative of the community of youth inspired by Swami Vivekananda. Ma'am, please. I offer my pranams to Swamijis. I would like to thank Ramakrishna Mission for inviting me here and giving my views in front of all. मैं खुद एक युवा होने के नाते आज बहुत सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि मैं आज आप सभी के बीच अपने कुछ विचारों को, स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को आप सभी के समक्ष रख पाऊंगी। जब आज से दो हफ्ते पहले जब सूरज जी ने मुझे पूछा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आप डूसू में रही हैं और हम आपके थ्रू कॉलेजेस में रीच करना चाहते हैं कि ताकि हम स्टूडेंट्स के बीच पहुंच सके और हम उन्हें यूथ कन्वेंशन के बारे में बता सकें, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस तरीके के यूथ कन्वेंशन में जहाँ पे हमें स्वामी जी के बारे में सुनने का अवसर मिलेगा, वहाँ पे हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो यूथ है वो पार्टिसिपेट कर पाएगा। और साथ ही मुझे खुद जब उन्होंने अप्रोच किया कि क्या आप भी हमारे बीच जो युवा है उनके लिए कुछ अगर बोलना चाहेंगे तो क्या आप हमारे साथ जुड़ेंगी, तो मुझे उस समय बहुत खुशी हुई कि मुझे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में समझने का अवसर मिलेगा, मुझे स्वामी सर्वप्रियानंद जी को भी सुनने का अवसर मिलेगा। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे उन्हें सुनने का आज अवसर मिला, रामकृष्ण मिशन में आने का भी अवसर मिला।
जब हम बात करते हैं रीबिल्डिंग इंडिया की, तो सबसे पहले प्रश्न हमारे दिमाग में आता है कि व्हाई वी नीड टू रीबिल्ड इंडिया। हम कैसे रीबिल्ड कर सकते हैं इंडिया को? क्या विचार हमें चाहिए रीबिल्ड करने के लिए इंडिया को? जैसा कि हम सभी को पता है, आज से 150 साल पहले स्वामी विवेकानंद जी ने अपने विचारों को रखा था कि हमें किस तरीके से भारत का पुनर्निर्माण करना चाहिए। हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो आध्यात्मिकता है, उसको हमें किस तरीके से भारत के लोगों के बीच में रखना चाहिए। आज उसी संस्कृति को, उसी स्पिरिचुअलिटी को रखने की जरूरत है। और वो काम एक वही व्यक्ति कर सकता है जो भारत को जानता हो, जो हमारे भारत देश के लोगों को जानता हो, भारत देश के लोगों को पहचानता हो। यह काम स्वामी विवेकानंद जी ने, जब उन्होंने पदयात्रा की थी पूरे भारतवर्ष में, तब उन्होंने भारत के लोगों को जाना, भारत के दुख को समझा, भारत के दर्द को समझा, भारत की संस्कृति को जाना। तब जाके उन्होंने यह निर्णय किया कि हमें भारत का पुनर्निर्माण करना चाहिए। जो भारत पहले था, जिस पर हम कायम थे, उसी को हमें आगे किस तरह से बढ़ाना है। इस काम को स्वामी विवेकानंद जी ने, इस विजन को, इस आइडिया को उस समय स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था। और आज हम सभी यूथ यहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो मुझे लगता है कि वही आइडियाज जो स्वामी विवेकानंद जी ने हमें इतने पहले दे दिए थे, उन आइडियाज पे काम करने का समय आज है। हमारे पास विजन है, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन जरूरत किस चीज की है कि हम उसे किस तरीके से यूज करें। हमें पता है कि स्वामी जी के आइडियाज क्या है, हमें पता है कि स्वामी जी ने हमें बहुत ऐसे व्यूज दिए हैं, बहुत ऐसे व्यूज दिए हैं कि हमें आज उन पे काम करने की हमें जरूरत है। स्वामी जी कहते थे कि जो यूथ है, जो युवा है, वो हमारे भारत देश की रीढ़ है, एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो भारत की दिशा को बदल सकता है। और जो यहाँ पे यूथ प्रेजेंट है, वो ये काम बहुत इजीली कर सकता है। और वो किस तरीके से कर सकता है? एजुकेशन से। एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट की नोट है। एजुकेशन के लिए स्वामी विवेकानंद जी भी कहते थे कि एजुकेशन हमें हमारे समाज के हर वर्ग को मिलनी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन जो है हमें हर तरीके के पॉसिबल चेंज हमारे अंदर, हमारे मेंटली, फिजिकली, हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस एजुकेशन लेकर आती है। और अगर आज हम एजुकेटेड होंगे तो हम आगे अपने विचारों को भी रख पाएंगे। एंड एजुकेशन मतलब सिर्फ यही नहीं कि एकेडमिक एजुकेशन, हम लोग उसको एकेडमिकली हम बहुत अच्छे हैं। हमारी एजुकेशन का मतलब ये भी होना चाहिए कि हमारा एजुकेशन समाज हित के लिए क्या काम कर रहा है, राष्ट्र हित के लिए किस काम आ रहा है। क्योंकि एजुकेशन सिर्फ डिग्रीज हासिल करना नहीं है, एजुकेशन से हमारे अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, यह भी बहुत मायने रखता है। आज हम दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर भी, अगर मैं बात करूं दिल्ली यूनिवर्सिटी की भी, तो वहां पे भी स्टूडेंट आता है एंड वो सिर्फ पढ़ाई को एकेडमिक्स में चाहता होता है कि बहुत अच्छा करे। लेकिन आज जो जरूरत है वो ये है कि हम अपने समाज के अंदर एजुकेशन का किस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यूनिवर्सिटी के अंदर भी हम जब काम करते हैं, और मैं एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से भी आती हूँ जो स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से जुड़ा हुआ है, तो हम अभी भी आज भी यह कोशिश करते हैं कि हम अपने समाज में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको किस तरीके से उनका समाधान कर सकते हैं। क्योंकि हम हमेशा प्रॉब्लम्स की बात हर कोई करता है, लेकिन सोल्यूशन की बात कोई नहीं करता है। आज हमारे पास अवसर है, हमारे पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि हमें अपने जो एजुकेशन के थ्रू हम जो चेंजेस लेकर आ सकते हैं समाज के अंदर। जो रूरल एरियाज के अंदर जो लोग हैं, जिनके पास एजुकेशन नहीं पहुंच पा रही है, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जिनके पास कहीं ना कहीं सब चीज़ों की कमी है, उनसे कहीं ना कहीं आज हम सिटी में रहते हैं तो हमारे पास वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। पर काम किस चीज़ पे करना है, हमें उसको किस तरीके से बदलना है।
और ये काम सिर्फ युवा कर सकता है। जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी भी कहते थे कि मुझे आप 100 युवा दो, मैं अपने भारत देश की जो है स्थिति बदल सकता हूं। तो आज हमारे पास इस ऑडिटोरियम के अंदर भी उससे ज्यादा युवा बैठे हुए हैं और वो भारत की स्थिति सच में बदल सकते हैं, क्योंकि यूथ जो है फ्यूचर है। इंडिया का फ्यूचर जो है वो यूथ है। और मैं बिलीव करती हूं कि आज अगर आप ये अपने अंदर दृढ़ निश्चय बना लें कि हमें यह काम करना है, हमें इस पॉजिटिव अप्रोच के साथ ये काम करना है, तो डेफिनेटली हम उस काम को पूरा कर पाएंगे। अगर हम सोच लेंगे, क्योंकि स्वामी जी कहते थे कि आप जो अपने अंदर अपने मस्तिष्क में सोच लेंगे वही आप हैं। इफ यू थिंक यू विल बी वीक, देन डेफिनेटली यू विल प्रेजेंट योरसेल्फ वीक। इफ यू बिलीव दैट यू आर स्ट्रांग, देन डेफिनेटली यू विल प्रेजेंट योरसेल्फ स्ट्रांग। तो आज आवश्यकता है कि अपने अंदर झांकने की कि हम क्या है, हमारे अंदर क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं, एंड हम किस तरीके से उस कैपेबिलिटीज को आगे अपने लाइफ में लेकर आ सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का कोट आज मैंने यहाँ पे भी पढ़ा और हम हमेशा से इन कोट्स को पढ़ते हुए आ रहे हैं। अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। दिस इज वेरी सिंपल कोट, बट it's very powerful. It is giving a very powerful message to all of us. तो हमें देखना है, हमें सोचना है, हमें समझना है कि हमारे समाज में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम किस तरीके से ओवरकम करेंगे। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है हम इस स्थिति में आज पहुंच चुके हैं कि हम पिछले जितने भी अगर हम बात करें आजादी से पहले की, तो कहीं ना कहीं आज उस स्थिति से हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं। कोविड के टाइम्स की भी बात करें तो कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्र के लोग, उन्होंने खुद अपने साथ के लोगों की हेल्प करी। अगर किसी भी चीज की उस पैंडेमिक में किसी भी चीज की प्रॉब्लम अगर किसी को आ रही थी, दवाइयों से लेकर राशन तक, तो सब तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला हमारे देश का युवा था। और आज भी हम कोविड की जो वैक्सीन है वो भी पूरे विश्व भर में दे पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम इस सिचुएशन में पहुंच चुके हैं, स्थिति में है कि हम अपने भारत देश को कहीं ना कहीं एक प्रोमिनेंट फेस दे पाए पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो जो स्थिति अभी चल रही है उसको आगे बढ़ाने का काम हम सभी का है, और मैं आशा करती हूं कि हम सभी राष्ट्र हित के लिए काम करेंगे। मैं खुद एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन से भी आती हूँ और खुद एक यूथ भी हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सब मिलकर स्वामी जी के विचारों को, स्वामी जी के विजन को, स्वामी जी के थॉट्स को, स्वामी जी का जो स्वप्न था उसको पूरा कर पाएंगे। और इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ ख़त्म करती हूँ, क्योंकि आज हम स्वामी जी को सुनने भी आए हैं। तो मेरा भी आज पहली अवसर मिला है मुझे भी, तो मैं भी अभी आगे सुनने को बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत एंथुजियास्टिक भी हूँ। तो आगे थैंक यू सो मच। Thank you very much, ma'am. Now, for the much awaited moment, I am privileged to invite our key speaker of the convention, revered Swami Sarvapriyananda Maharaj Ji. Swami Sarvapriyananda Maharaj Ji is a current resident Swami and a head of the Vedanta Society of New York, a position that he has been serving since 2017. He was an Acharya for the monastic probationers training at Belur Math and served in various capacities in different educational institutions under Ramakrishna Mission in India. Prior to New York, he was the Assistant Minister of the Vedanta Society of Southern California. He was also an Inaugural Fellow for the year 2019 and 20 at Harvard Divinity School. His discourses on Vedanta in a much simplified manner has benefited many of us in many various ways. And we are fortunate today to hear from Maharaj Ji. Welcome, Maharaj Ji. ॐ नमः श्री यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे
My pranams to revered Swami Shantatmananda Maharaj, other revered monks, namaskars to the brahmachari brothers here, teachers, and of course, the audience today, which is the youth of India. I'm going to speak to you in a mixture of English and Hindi. Is there anybody here who doesn't understand Hindi? If there's somebody who doesn't understand Hindi, I'll stick only to English, but let's see how it goes. Swami Vivekananda, his birthday is National Youth Day, 12th January. And Swami Vivekananda is really, it embodies the spirit of the youth. Just consider his life. Whatever he did in his life, 10 years. It's an enormous contribution, 10 years. In 1893, he went to the World Parliament of Religions in Chicago, and then he spread the message of Vedanta across the length and breadth of the United States, and partly in Europe also. He opened the doors of this accumulated spiritual wisdom heritage of India, 5,000 years of spiritual wisdom and heritage. He opened the doors of the West to this. Not only Swami Vivekananda, but after that, the other monks of the Ramakrishna mission who went after him, and many other teachers of different traditions of Hinduism and other Indian traditions. They all went to the West. Swami Vivekananda had built a bridge between the East and the West, between India and the West. Where I come from, the Vedanta Society of New York, that's the first Indian ashram in the West. Swami Vivekananda built it, he founded it in 1894. After Swamiji, if you look at how Indian wisdom has spread all over the United States, you have people like Paramahamsa Yogananda, who went on Self-Realization Fellowship. Then you have the Maharshi Mahesh Yogi, Transcendental Meditation, which become popular all over the world. You have Srila Prabhupada, who went there, and this ISKCON movement. It's known all over the world, but where was it founded? New York, by Srila Prabhupada. So the entire Vaishnava tradition goes there. Then the Buddhism, which is so popular, a whole procession of bhikkhus and lamas, especially now Tibetan Buddhism is very popular. It's the wisdom of India. His Holiness Dalai Lama, again, I think he has spoken here, right? Dalai Lama has spoken here. He says again and again, it is the wisdom of Nalanda. Nalanda tradition is our tradition in Tibet. So all of this, plus yoga. Yoga is widespread. I think it was more widespread in the United States than in India. Thanks to Ramdev Babaji, now it is more widespread in India. But until that time, we did not value it. It was very popular in the United States, in Canada, in Europe. That's why when the Indian government took the initiative in the United Nations to declare, I think June 22nd or 21st, June 21st, International Day of Yoga. It found ready acceptance across all the nations in the United Nations. No resolution has been passed with so much unanimity as this resolution, that let it be the International Day of Yoga. But how? Why? Did it suddenly happen? No. It has been spreading in the United States starting from Vivekananda onwards. In fact, there was an article in the Wall Street Journal a few years ago about Swami Vivekananda. It said, the man who brought yoga to the West. Of course, he did not bring just Hatha Yoga, but he brought Bhakti Yoga, Jnana Yoga, Raja Yoga, and Karma Yoga. But then there were these other great yogis, Hatha Yogis, all of them were for some reason from Mysore. Krishna Amacharya, B.K.S. Iyengar, Pattabhi Joyce. They spread yoga across the West. So all of these traditions, Swami Vivekananda built the bridge. And across this bridge, so much of knowledge and spiritual traditions from India have flowed to the West. He came back. This was not enough. He came back to India. And then he proceeded, the second part of his plan, to awaken his motherland. You just heard from Revered Maharaji, Mahatma Gandhi, whole generation of leaders of the national freedom struggle were inspired by Vivekananda. Jawaharlal Nehru, here in New Delhi Ramakrishna Mission, he said,
In my generation, we all read Vivekananda. You are not reading enough in this, that time he's saying, 1950s. So he said, I want the youth of today to read Vivekananda. We are all inspired by Vivekananda. Whole generations of national freedom struggle leaders. Awakening the nation to a sense of its own glory. First, a sense of its own spiritual glory. He spoke from lectures from Colombo to Almora. He sent this power coursing through the veins. He realized that India is not dead. India is just sleeping. It needs to be awakened. So this is what he did for the next few years of his life. And having done this, 4th July 1902, at the age of 39, he used to say, I will not live to see 40. At the age of 39, he passed. He gave up the body. This is the spirit of youth. In 10 years, building this bridge between the India and the West, 5,000 of years of spiritual development transmitted across the world to the West and then across the world, and coming back to his motherland, awakening his motherland again, putting it on the track to again to growth and prosperity and independence finally. In 10 years, done, finished. This is the spirit of youth. This is the spirit we must imbibe today. And what I propose to do in the time that is there for us, instead of giving a talk and then taking questions, what I'm going to do now is I will divide this talk into 3 parts, into 3 sessions. One session, then there will be some interaction, some questions, interaction with you about that session. Then the second session, and then the third session. So instead of listening to a long, boring talk when you can happily switch off and go to sleep, we will be a little more active. So door के साथ कुछ समस्या चल रहा है. Closing and opening the door. It should be like the air hostesses in in the aeroplane. Like कहाँ exit है निकास. You should show. So keep one. If you want to leave, पीछे से ना. So anybody who wants to go out and come back, just use the door at the back. So the 3 sessions which I'm going to talk about. 3 words. If you want to take away something from today's program, 3 words. And they're all words from Swami Vivekananda. 3 words: Shraddha, Ekagrata, Seva. Shraddha, Ekagrata, Seva. These are the 3 parts of the presentation which we are going to go through now. The first is Shraddha. As all the speakers before us have said, confidence in yourself, faith in yourself, self-esteem, self-confidence. These are all the meanings of the word Shraddha, and many more meanings are there. This is one quality that Swami Vivekananda wanted to evoke in all of us, to develop this power of Shraddha. He says the difference between an ordinary person and a great person is this Shraddha. Those who have it, they become great. Those who do not have it, they degenerate in life. Somebody quoted here, yes, you quoted, that Swami Vivekananda says that I learned from my master, that means from Sri Ramakrishna, those who think themselves weak will become weak. And the converse is true also. Those who think themselves strong will become strong. This strength and weakness, this difference is in Shraddha, is in faith in yourself. Question may arise, we are always taught by religion, have faith in God. But what is the relationship between faith in yourself and faith in God? Apne upar Shraddha aur Bhagwan pe Vishwas, what is the relationship? I found the answer in Mahatma Gandhi's letter. He writes, only those who have faith in themselves can have faith in God. Very interesting insight. Simple but interesting insight. जिसको अपने आप ऊपर विश्वास नहीं है, उनका भगवान पे विश्वास भी टल जाएगा. When a challenge comes, when difficulty comes, I can't believe I believe myself. I don't have faith in myself. I can't believe in God also. I may say I believe in God, but when trouble comes, I will lose faith in God also. Faith in yourself, first and foremost. That this idea that never have this word I cannot in your dictionary. Always say I can. That I'm able to do whatever is in front of me. There is this psychologist in the United States, Albert Bandura. He developed this idea of self-efficacy. Self-efficacy, एक term है positive psychology में. The term is, I think people are finding it difficult to see if you stand there, right? आप जहाँ भी खड़े होंगे, somebody behind you will find it difficult. So it's better to stand on the side, yeah.
Self-efficacy, ये क्या term है? He says that this feeling of capability of dealing with situations in life, मैंने बहुत कुछ देख लिया लाइफ में, ये आगे भी देख लेंगे, इसको संभाल लेंगे. This kind of feeling. I have dealt with different difficult situations in my life till now, and there will be whatever will come up in future, I will deal with it. I'll be able to deal with it. This feeling is self-efficacy. And Albert Bandura says that those students, he observed it in students, those students who have this feeling of self-efficacy, they are able to do better in school and in life. कैसे होता है कि कोई मान लो एग्जाम, दिस इज फ्रॉम एल्बर्ट बेंडूरा, कोई एग्जाम्स दे रहा है एंड देयर इज अ डिफिकल्ट मैथमेटिक्स प्रॉब्लम, तो कुछ छात्र ऐसे हैं कि वो प्रॉब्लम देख के कोशिश किया, नहीं हुआ, छोड़ देते हैं, स्किप करके चले जाते हैं. कुछ ऐसे हैं वो लगे रहते हैं उस पर, दे कीप ट्राइंग इट, दे फील दैट इफ आई ट्राई आई कैन डू इट, आई हैव ट्राइड मेनी थिंग्स, इन मेनी केसेस आई हैव बीन सक्सेसफुल. So who has the greater chance of success? जो the first sign of difficulty and abandons the effort, or those who keep trying? Obviously, those who keep trying will have some better chance of success, definitely. Those who let go at the first sign of difficulty, they have no chance of success. So this faith in oneself is deeply connected to success in life. What or how do we gain this faith in oneself? This Shraddha, actually it has, I would say, 3 components. Most important, first of all, faith in yourself. अपने ऊपर श्रद्धा. Then there is faith in others. दूसरों पे श्रद्धा, दूसरों की श्रद्धा करना. And then faith in your nation and your culture. अपने society, समाज, देश, सभ्यता पर श्रद्धा करना. I'll speak a little bit about each of them. But first, most important, how can we have faith in ourselves? How can we develop that? How can we develop Shraddha in ourselves? Swami Vivekananda considered this the most important quality. ये होगा, बाकी सब जीवन में हो जाएगा. It will come one after another. ये नहीं होगा, you will sabotage yourself. Self-sabotage. कैसे होता है कि आप देखते हैं एक बहुत बड़ी कार है, Mercedes or something like that. And if the driver is pressing the accelerator and the brakes together, दोनों पर जमा के पैर रखा हुआ है, तो क्या होगा? गाड़ी आगे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी. The engine will roar and it will get overheated, car will not move. उससे पास से कोई ऑटो, आजकल नया भी आया है, टोटो कहते हैं उसको, वो आराम से निकल जाएगा. The reason is you're self-sabotaging yourself. जिसको अपने ऊपर श्रद्धा नहीं है, अपने ऊपर फेथ नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ एस्टीम नहीं है, इट्स लाइक अपना जितना भी क्वालिटी है, यू आर प्रेसिंग द ब्रेक्स इन योर ओन लाइफ. अपने आप को आप अपने पाँव आप कुल्हाड़ी कहते हैं ना. So that's what we are doing. So how do we change that? वो ब्रेक से कैसे पैर हटा लें, एक्सीलरेटर पर कैसे पैर रखें? So I will draw a little bit from positive psychology here. A few ideas I'll share with you. These are very important in our lives, and you will find every one of these ideas, though I'm drawing from positive psychology, it has come directly from Swami Vivekananda. Before I go into it, let me tell you something. Many of the great ideas which have gone to build our thought, especially Western thought, in the 20th century and now, have actually come from Vivekananda. So somebody will say, आप तो विवेकानंद के चेले हैं, तो इसीलिए आप कह रहे हैं विवेकानंद से सब कुछ आया है. No! 2 years back, आपने अभी सुना, I got a chance to study at Harvard University for 1 year. 2 years back, when I was at Harvard, I met this young Vietnamese researcher. वो PhD कर रहा था, वियतनाम से आया हुआ लड़का, not at Harvard but in Boston College. He was doing PhD in management science on work. He called me कि आप हार्वर्ड में हैं, आप सुने हैं, can I meet you? I want to talk about something. So I met him and he said he was working on the key ideas in work, in management in the 20th century, the important conceptual developments in management science in the 20th century. And he was trying to trace out where did these ideas come from. And he said, हर केस में हमको मिला कि हम उसको ट्रेस बैक किए, कहाँ से, किसके पास से ये सब आइडियाज आए हैं. He said, I found one Indian visitor in late 19th century, Swami Vivekananda. उनका नाम ही मैंने सुना नहीं था. I'd never heard about him. Then I started reading about Vivekananda and I became so impressed. कोई क्रेडिट नहीं मिलता उनको. And of course, Vivekananda never wanted credit. He said, I will be a voice without a form, inspiring men everywhere until the universe knows it is one with God. हमको कोई credit नहीं चाहिए. I'll be the message only. And unfortunately, we also don't give credit.
But now this researcher, I hope he writes so well read in Vivekananda, and how nicely he has traced out different ideas which are current in modern management thought, in the philosophy of work in the West. He has traced it back to Vivekananda, and he's going to write a book, and articles also he'll publish. Anyway, some ideas let me give about self-esteem, about self-confidence. पहली बात, we must live with self-awareness. First point, living consciously, living with self-awareness. Swami Vivekananda said that power will come, glory will come, goodness will come, all that is great and noble will come in your life when the sleeping soul is aroused to self-conscious activity. तब के दिनों की थोड़ा भाषा है सेल्फ कॉन्शियस, आज उसको वो ठीक बैठता नहीं है, तो सेल्फ अवेयर कहते हैं हम. लिविंग कॉन्शियसली, लिविंग विथ सेल्फ अवेयरनेस. इसका क्या मतलब है? देखो, दिन भर इफ वी फ्लोट विदाउट एनी अवेयरनेस, विदाउट एनी पर्पस, कब उठेंगे? जब मन हुआ. और मम्मी पापा ज़्यादा डांट दिए तो उठ जाएंगे, नहीं डांटे तो नहीं उठेंगे, थोड़ी देर बाद उठेंगे. कल बहुत रात जगा था, आज देर में उठेंगे. क्या करेंगे उसके बाद? देखा जाएगा कैसा दिन चलता है. एक्सरसाइज सम डेज नॉट, आज बहुत गर्मी है, नहीं करेंगे. देन खाने का समय क्या है? ठीक नहीं है, कभी अभी खा लेते हैं, कभी बाद में खाएंगे, कभी. देन फिर काम का, सो आई विल स्टार्ट, मेरा असाइनमेंट है, वर्क है इन द कॉलेज, इन द यूनिवर्सिटी. बट देन देयर इज लॉट ऑफ मैसेजेस ऑन माई फोन, लॉट ऑफ लेट मी सी, मेरा सोशल मीडिया का स्टेटस क्या है, कितने लाइक्स आए हैं. उसके बाद अच्छा एक यूट्यूब वीडियो मिल गया, स्वामी सर्वप्रियानंद का वीडियो, देखते हैं उसको, वहाँ से लिंक करके दूसरा चला गया कहीं पर एक प्रोग्राम में, कुछ एक सॉन्ग आ गया, वहाँ से वहाँ तीसरे जगह पे चले गए. होता है कि नहीं? दिस इज नॉट लिविंग कॉन्शियसली. दिन भर ऐसे बिताए, थोड़ा काम किए, बहुत फिजूल का समय बर्बाद किए, कुछ अच्छा काम शुरू किए, छोड़ दिए. हर दिन नया नया अच्छा काम शुरू करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, दूसरा काम हर दिन शुरू करते हैं. एंड आई डू लाइक स्पेंड माई डे लाइक दिस. टेल मी वन थिंग, एट द एंड ऑफ द डे डू यू फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ? अपने ऊपर श्रद्धा आती है ना? कामयाबी का एक स्पिरिट आता है कि अच्छा दिन बीता? नहीं. अपने ऊपर ग्लानि आती है, ये ऐसा नहीं चलेगा. आई कांट स्पेंड माई डे लाइक दिस, टुमारो आई विल ट्राई टू डू बेटर, ऐसा फीलिंग आता है. If I do not live consciously, if I do not live with self-awareness, I will never have faith in myself. So live with self-awareness. What am I doing? कहाँ हैं? कैसे बैठे हैं? You see? क्या कर रहे हैं? Why am I doing this? What will I gain out of it? So we have come here for a really good purpose. So also I must be aware, consciously be fully present here so that I can take something away. When I leave the hall, I should be able to say to myself, ये फलाने कुछ चीज़ मिले हमको. So living with self-awareness, living consciously. This is point one. Without that, nothing is possible. जो sleep walking करके जीवन बिताते हैं, there is no possibility of development there. Second, self-acceptance, the practice of self-acceptance. सेल्फ एक्सेप्टेंस मतलब अपना जो सच्चाई है वो स्वीकार कर लेना. ये मेरी बात नहीं है, ये एक महात्मा जी ओंकारेश्वर वाले थे, बहुत बड़े पहुंचे हुए महात्मा जी थे. वो सब वेदांत पढ़ा के उसके बाद वो कहते थे साधुओं को, देखो अपना सच्चाई स्वीकार कर लेना बहुत भारी बात है. टू एक्सेप्ट योर ओन ट्रुथ. ये आदर्श है, ये विवेकानंद है, ये वेदांत है, ये साइकोलॉजी है, ये सब ठीक है. मैं कहाँ हूँ? What am I? What are my weaknesses? What are my problems? And what are my strengths? Self-acceptance. हमें तो भलाई भी कुछ है. Accept that. अपने आप को सिर्फ कोसते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, और अपने बारे में गलत फहमियां है तब भी कुछ नहीं होने वाला है. So self-acceptance. These are my weaknesses. किसी को बोलने का जरूरत नहीं है, बट अपने आप को बोल के देखो. These are my problems. यहाँ हमको सावधान होना है. These are my strengths. इसको हमको डेवलप करना है. Self-acceptance. Self-improvement is possible only when I have self-acceptance. मैं क्या हूं, कहां हूं, वो जानने के बाद आगे बढ़ सकता हूं. उसका अगर एक कॉन्शियस
awareness नहीं है about my own strengths and weaknesses, I can't go forward. Self-acceptance. तीसरा, practicing self-responsibility. Self-responsibility means, Swami Vivekananda says, take the entire blame upon ourselves. आजकल क्या हो गया है? There is a tendency to blame others. तुम्हारा जीवन ऐसा क्यों है? क्यों भाई ड्रग एडिक्ट बन गए? क्यों भाई जीवन इंटरनेट पर बर्बाद कर रहे हो? बहुत सारा कारण है. ये कारण क्या है कि ये सिस्टम बहुत बुरा है. ये सरकार कुछ नहीं करती हम लोगों के लिए. पेरेंट्स तो, और वेस्ट में एक स्टाइल है, सब कुछ अपने पेरेंट्स पर. आई हैव बीन अब्यूज्ड बाय माय पेरेंट्स. पेरेंट्स दे हैव नॉट टेकन केयर ऑफ मी. ये हो जाता है. एंड इट्स सीन एज आई गिव एक्सक्यूजेस फॉर माय ओन प्रॉब्लम्स. मैं ये नहीं कर रहा हूं कि प्रॉब्लम्स नहीं है. देयर आर प्रॉब्लम्स इन सोसाइटी, देयर आर प्रॉब्लम्स इन गवर्नमेंट, देयर आर प्रॉब्लम्स विद पेरेंट्स. नो डाउट अबाउट इट. बट इट विल नॉट हेल्प मी to keep on blaming others. The moment I blame others, I shift responsibility from self-responsibility to other responsibility. Then I have made space, excuses for my weaknesses. कभी ठीक नहीं होने वाला है. Let there be problems, 1,000 problems outside. ये 100% know it for sure. Whenever there are problems in my life, the majority of the problem has been created by myself. उसमें मेरा भारी योगदान है, मेरा अपना प्रॉब्लम में. देयर इज सोसाइटी सिस्टम, उसका कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, नो डाउट. सो प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी. हेल्थ बुरा है, क्या है आपकी? ये जेनेटिक प्रॉब्लम है. हम लोग इंडियन है ना, तो डायबिटीज हम लोग को बहुत जल्दी हो जाता है. तो ये जो शक्कर चीनी तुम खाते रहते हो जीवन भर, एक्सरसाइज नहीं करते हो, टेंशन लेके बैठे रहते हो, इसका कोई योगदान नहीं है अपने डायबिटीज पर? सिर्फ जेनेटिक्स? नो. It's not only in India, it's in the West also. अमेरिका में बहुत है. Playing the victim card. I have been victimized. इसीलिए मेरा जीवन बर्बाद क्यों है? क्योंकि मैं विक्टिम हूँ, सब लोग हम पर अत्याचार किए हैं, इसलिए मैं बर्बाद हो गया. तो किसका फायदा हुआ भाई? So this third thing is the practice of self-responsibility. Swami Vivekananda says, take the entire responsibility upon yourself and lead a responsible life. You are responsible for your health. You are responsible for the state of your mind. Eleanor Roosevelt थे, Franklin Roosevelt, president of America तब के दिनों में, उनके wife, she had a nice quote, I liked it. Nobody can hurt you without your own permission. आपको जो दुख पहुंचता है ना दूसरों के व्यवहार से, उसमें आपका भी योगदान है, हमारा योगदान है. कि कोई हमको कुछ बोल दिया, कोई दुर्व्यवहार किया, वो तो वो किए हैं, उसके बाद मेरा जो रिएक्शन होता है अंदर, उसमें मेरा योगदान है. I have permitted that thing to come inside. And then I react with sorrow, anger, bitterness. Uska 50% or more than that responsibility is mine. So accept, practice self-responsibility. And then practice self-assertiveness. ये थोड़ा Western concept है, but it's useful for us. What is self-assertiveness? Assert yourself. देखो विवेकानंद का कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस था बिफोर ही बिकेम विवेकानंद. एज नरेंद्रनाथ दत्ता, मेनी ऑफ द पीपल हु मेट हिम फर्स्ट, श्री रामकृष्ण बोलते थे वो नरेंद्र बहुत अच्छा लड़का है, उससे जाके मिलो. आप देखोगे कई जगह पर जो पहला रिएक्शन था लोगों का, कितना अहंकारी है लड़का, क्या अपने आप को क्या समझता है. बट आफ्टरवर्ड्स दे सॉ ही इज रियली ग्रेट. So you have a sense of your own power, your own greatness. You have a right in this world to exist. देखो सेल्फ असर्टिवनेस क्या होता है? You have a right to say what you think is right. You have a right to ask what you want from your parents, from your teachers, from the community, from your friends. Honestly, of course, they have a right to say no also. You have to be honest and respect this. इसका opposite क्या है? There are two this spectrum. One end of the spectrum is aggression. कोई एग्रेसिव हो जाता है. दूसरा एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, दिस इज मैनिपुलेटिवनेस. वीक लोग मैनिपुलेटिव होते हैं कभी कभी, दूसरों को मैनिपुलेट करके अपना हासिल, जो व्हाट दे वांट ट्राई टू गेट इट. और कुछ है दे बिकम बुलीज, एग्रेसिव, बाय फोर्स, बाय शाउटिंग, बाय स्कोल्डिंग, दे ट्राई टू गेट व्हाट दे वांट. बोथ आर नॉट गुड. In between what is good is self-assertiveness.
ये हम लोग बहुत साल पहले MBA में कोर्स हुआ करता था. I don't know if it's there now. They used to call it AT, assertiveness training. So it is a little bit needed, especially for our Indian boys and girls. One thing I've noticed, highly qualified, IIT से कहीं से अच्छी इंजीनियरिंग डिग्री करके उधर गया हुआ है, इन न्यूयॉर्क मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर रहा है, गुड, और PhD करने गया है इन यूनिवर्सिटीज़. एंड येट हम लोगों का क्या होता है, थोड़ा सा शाइनेस, थोड़ा सा डर रहता है, अपना कुछ जाहिर नहीं करना चाहते हैं, लगता है कि कहीं कुछ गलत बोल दे, लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में. सेल्फ असर्टिवनेस इज अ गुड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ असर्टिवनेस. ये नहीं होगा तो अपने ऊपर फेथ नहीं आएगा. ऑलवेज देयर इज अ काइंड ऑफ वीकनेस विच विल स्टे. टेल योर प्रोफेसर व्हाट यू थिंक, टेल योर मैनेजर व्हाट यू थिंक. सावधानी से, क्योंकि कल्चर अलग होता है. उधर आप प्रोफेसर या मैनेजर को नाम से पुकार सकते हैं, इधर आपको बोलना पड़ेगा कि फलाने बाबू या मैम, ऐसा बोलना पड़ेगा. अब नाम से मत पुकारिए, मुश्किल हो जाएगी. बट कल्चरल डिफरेंसेस आर देयर, बट असर्टिवनेस इज गुड फॉर एवरीबॉडी. सेल्फ असर्टिवनेस. अब देखो, जो एक पर्सनल ओनरशिप होती है ना किसी चीज का, आई हैव नोटिस्ड जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो अपना बिजनेस चलाते हैं, अपने लाइफ का चार्ज में हैं, दे हैव अ काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस. मैं किसी और का नौकरी कर रहा हूँ तो लगता है ये मेरा नहीं है और दूसरे के लिए हम नौकरी कर रहे हैं, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो अपने आप पर भी कॉन्फिडेंस या एक प्राइड नहीं आती है अपने काम में. आई एम नॉट इन चार्ज ऑफ माई जॉब, आई एम नॉट इन चार्ज ऑफ माई लाइफ. और दूसरे का जो अपना चलाता है, छोटा भी हो, बट दे हैव अ सर्टेन स्ट्रेंथ इन देम. दैट सेल्फ असर्टिवनेस इज देयर. लिविंग पर्पसफुली. स्वामी विवेकानंद सेड, ऑलवेज हैव अ हाई गोल इन लाइफ. अपना कॉन्फिडेंस कहां से आता है कि आई वांट समथिंग इन लाइफ एंड आई एम ट्राइंग टू गेट इट. वो डिग्री हो सकता है, पैसा हो सकता है, दूसरों की भलाई हो सकता है, या अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी हो सकता है. बट आई हैव अ पर्पस. इफ आई आस्क, समटाइम्स आई आस्क इन ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स, व्हाट इज योर गोल इन लाइफ? गोल क्या होना चाहिए तो खड़े होकर बहुत लोग बोल देंगे, तुम्हारा क्या गोल अभी क्या है भाई? गोल ऐसा तो कुछ नहीं है, जैसे सब लोग कर रहे हैं मैं कर रहा हूं. तो ये इज वेरी स्ट्रेंज. आप यहां पर कभी टैक्सी या कुछ बुलाएंगे तो वो बोलेगा कहाँ जाना है भाई? आप कभी बोलेंगे जैसे चल रहा है चलने दो, जैसे सब लोग जा रहे हैं वैसे ही चलो? यू विल नेवर से दैट. यू विल से आई वांट टू गो टू दैट पर्टिकुलर लोकेलिटी. किस रूट से जाना है ये भी आप बोलेंगे, कितना पैसे में जाना है, यू विल मेक श्योर. सो इन टैक्सी वी आर सो श्योर. इन आवर लाइफ कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वी डोंट नो. देयर इज दिस फनी स्टोरी ऑफ अ मैन इन अ विलेज. तो कोई जनाब घोड़े पर सवार होके बहुत तेज भाग रहे हैं. तो जो विलेज में खड़ा है गांव वाला बेचारा, वो देखा कि साहब भाग रहे हैं घोड़े पर, पूछ रहे हैं कि अरे साहब कहाँ जा रहे हैं इतने तेजी से? तो वो उधर से चिल्ला के बोला, पता नहीं, घोड़े से पूछो. कोई बिठा दिया है बेचारे को तो वो भाग रहा है. हम लोग का वो वैसा ही हुआ है. वी आर सिटिंग ऑन द हॉर्स ऑफ आवर लाइफ. वो कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, क्यों कर रहे हैं पता नहीं, सब लोग कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं. So there must be a purpose in life. It could be anything. Swami Vivekananda says, choose your own highest goal. दो बात बोले, own highest goal, जिसमें अपना खिंचाव है, लगाव है, अच्छा लगता है आपको. Let that be your goal. तो बहुत सारे goals हमको अच्छे लगते हैं, तो उनमें से जो highest है, आपको जो best लगता है, let that be your goal. And it can change. आज ये है, after some time it can change. But you must have a conscious goal in your mind कि मेरा जीवन कैसा होना चाहिए, मैं कैसा, what do I want to be, और जीवन में क्या करना चाहता हूँ. There must be some goal, some purpose and a higher purpose in life. So living purposefully, इससे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आता है, इससे अपने ऊपर फेथ आता है, नहीं तो नहीं आता है. लास्ट वन, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, सत्य. ऑनेस्टी टू योरसेल्फ. दूसरे क्या बोल रहे हैं वो सेकेंडरी है. One must have one's own standards. हर चीज में अपना स्टैंडर्ड होना चाहिए. I will tell the truth. I will have discipline in my own life. I will try to help others. और छोटी छोटी चीज में, when I'll get up, what is my standard of physical health, ये सब मेरा अपना स्टैंडर्ड होना चाहिए. दूसरों की बात छोड़ो. But I should not violate my own standards. जो हम खुद सोच रहे हैं मेरा लाइफ का क्वालिटी इतना होना चाहिए,
itna integrity, itna higher purpose. So I should ask myself, am I living up to my own standards? If I don't live up to my own standards, दूसरा कोई क्या बोलेगा वो दूर की बात है, लेकिन I will अपने आप को मैं कोसता रहूंगा अंदर से there will be a voice telling me you're not good enough. अगर वो voice बोलता रहे, then I can never have faith in myself. One great way to have faith in yourself is to have your own standards, honesty, discipline, and to stick to them as much as possible. नहीं भी हुआ, अगर कोशिश कर रहे हैं stick करने के लिए, तब भी ठीक है. There must be a struggle. क्या अचीव किए हैं, that's not important. What are you struggling for now? That's important. If I have said 6 things, these are all leading to personal श्रद्धा, अपने ऊपर श्रद्धा बढ़ाने के लिए. All of these are practices. और ये 6 I have taken it from a book. आजकल कितने लोग पढ़ते हैं पता नहीं, but it's a very nice book by a psychologist, Nathaniel Branden. 6 pillars of self-esteem. अपने ऊपर श्रद्धा बढ़ाने के लिए जो 6 स्तंभ हैं. 6 pillars of self-esteem. Let me go through the 6 quickly. This practice of living consciously, 1. And then the practice of accepting, self-acceptance. Practice of self-acceptance. अपना सच्चाई मान लेना, अपने आप. दूसरों के बताने की जरूरत नहीं, but I should be honest to myself. वहां से improvement होगा. Then third one, practice of self-responsibility. दूसरों का दोष नहीं, मेरा दोष है. My strength, my weakness. Then I will develop. And third one, practice of self-assertiveness. जो सोचते हो, जो बोलना चाहते हो, जो करना चाहते हो, करो उसको. Be honest and be courageous. Go ahead. Then fifth one, practice of this purposeful living. Practice of purposeful living. एक goal होना चाहिए life में. There must be a goal for the life. There must be a goal for this year. There must be a goal for this month. There must be a goal for this week. There must be a goal for this day and for the next 1 hour. In general होना चाहिए. And then finally, honesty, integrity. Practice of personal integrity. 6th. 6 pillars. हर चीज you can see how directly it comes from Swami Ji. The basic idea, fundamental ideas. ये अपने ऊपर श्रद्धा. Then the next one, just 2 more points, then I will stop and we'll discuss it a little bit. दूसरों पर श्रद्धा. You must have respect for others. You know, if I don't respect myself, अंदर ही अंदर कहीं पर दूसरों पर भी respect नहीं होगा. Jealousy हो सकती है, ईर्ष्या हो सकती है, लेकिन respect नहीं होगा. Josephine MacLeod, who was very close to Swami Vivekananda, she never said herself that a disciple of Swami Vivekananda. उसका अपने ऊपर इतना confidence था उनका. She said, I am a friend of Vivekananda. And she helped Vivekananda throughout her life, till her death. बहुत किया उन्होंने इंडिया के लिए. Swami Vivekananda told her, she asked, what can I do for you? And he said, love India. And she did it for the rest of her life. Anyway, she said, when I met Vivekananda, what was my feeling? She said, I have met many great people in my life. She was a very high society lady. I have met the Tsar of Russia. अभी तो पुतिन की बात छोड़ो. Anyway, so at that time, Tsar of Russia. And I felt, when I met the Tsar of Russia, I felt how great he is and how small, how insignificant I am. But when I met Vivekananda, I felt how great he is, how great I am. This is what Vivekananda could do for you. You could see he is a great person, but he would arouse the sense of greatness in you. क्योंकि वो दूसरों में उनका श्रद्धा था. He had faith in us. He had a very interesting definition of humility. विनम्रता का स्वभाव. He said humility does not consist in being a doormat. Humility means seeing the greatness in others. विनम्र होना क्या है? दूसरों में महानता देखना. हम लोग क्या समझते हैं विनम्र होना यानी हम नीचे हैं. ऐसा नहीं. आप ऊंचे हैं, you are great, but you also see greatness in others. So श्रद्धा in others, second thing. First श्रद्धा in oneself, श्रद्धा in others. Third, I want to stress this a little bit. श्रद्धा in our country, in our religion, in our culture. This is important. कुछ दुखदायी बात हम बताते हैं आपको.
1-1.5 साल पहले मैंने देखा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हो रहा है। वहाँ तो तब लोग स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते थे, ट्रंप के विरोध में ये सब होता था। एक मैंने देखा कि कई प्रोटेस्ट हुए बाय इंडियन स्टूडेंट्स अगेंस्ट समथिंग इन इंडियन गवर्नमेंट, कुछ सीए एनआरसी कुछ भी, देयर इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो मैंने उन स्टूडेंट से बात किया, आई स्पोक टू देम, यू सी हैव यू एवर नोटिस्ड किस इतने सारे देश से स्टूडेंट्स है वहाँ पर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कभी देखा किसी देश के स्टूडेंट अपने देश के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं इन इंटरनेशनल फील्ड? कभी नहीं। आई नेवर सॉ इट एंड दे ऑल्सो कुड नॉट से, हाँ ऐसा तो कभी नहीं देखा। क्या उन सब देशों में कुछ गलत नहीं है? इंडिया से बहुत ज्यादा बुरा हाल है उधर, मेनी मेनी कंट्रीज मच वर्स। तो ये क्यों कर रहे हैं? अब क्यों कर रहे हैं? द रियल रीजन इज, ये बहुत खतरनाक रीजन है। इट्स नॉट रियली कि मैं ये पॉलिटिकल इशू को सपोर्ट करता हूं, हमारा गवर्नमेंट या कोई कुछ खराब कर रहा है उसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट करें, दैट यू कैन डू। बट मैंने एकदम नजदीक से देखा कि द रियल रीजन एक अपने ऊपर हीन मानसिकता है। आई विल टेल यू, दे में सी, सम ऑफ द स्टूडेंट्स में सी, उनको बुरा भी लग सकता है कि मैं बोल रहा हूं उनके बारे में ऐसा, लेकिन इट्स नॉट जस्ट देम, इट्स इन ऑल ऑफ अस, उसमें है। The real reason I am protesting against my country, my government, some policy is मैं अपने जो गोरे फ्रेंड्स हैं, white skinned boys and girls in my class, उनके सामने हीरो बन सकूं। अपना देश, अपना कल्चर को गाली देना एक हीरो बनने का एक तरीका है, गलत तरीका है और bound to fail। आप हीरो नहीं बन सकते, they will not respect you। लेकिन कहीं लगता है हम इनसे नीचे हैं तो कैसे इनकी बराबरी करें। I'm also very cool. Being cool is, I'm also very cool. I can criticize my country. मैं इतना forward thinking हूँ। I never saw that same thing in any other student group. Unfortunate, very unfortunate. It comes from a sense of inferiority. अपने ऊपर श्रद्धा नहीं है, इसलिए अपने देश के ऊपर श्रद्धा नहीं है। Look at the difference in what Swami Vivekananda did. More than 100 years ago, one of the speakers pointed out, going there at that time when this country was colonized, when this country was desperately poor, people were starving, illiterate, under a foreign power, सब लोग नीचा दिखते थे भारत को। तब के दिनों में जाकर स्वामी विवेकानंद in the West, at no point did he ever once criticize India. Not only that, at every time when India was attacked, he defended India fully. He did not give 1 inch of ground. And when he came back to India, he did not spare us. हर लेक्चर में against casteism, against the oppression of women, against superstition, he hit us very hard. लेकिन उनका क्या था? आपको क्रिटिसाइज करेंगे आपके मुंह पर, आपके पीठ पीछे, आपको I will defend you till my death. This was the spirit of Vivekananda. In contrast to that, I am sorry to say, there are students की बात नहीं कर रहा हूँ, they are young. There are any number of professors in American universities, अच्छी positions में हैं, our own intellectuals, Indians, who have made an industry out of criticizing India. और तो वहाँ गोरे लोग कंफ्यूज क्यों नहीं होंगे? ये इंडियन प्रोफेसर आके बोल रहे हैं कि इंडिया इतना बुरा है, तो students will be confused. So this is something that it comes from lack of Shraddha. I don't have Shraddha in myself, I cannot have Shraddha in my culture. एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं आपको। हम पढ़ रहे थे जब at the peak of the COVID, तो यहाँ का सरकार ने they had made an announcement that इतने बजे क्या वो शब्द, शंख बजेंगे, घंटा बजेंगे, बेल बजेंगे, तो ये सब for a few minutes every day to raise the morale of the people and what not. और तब मैं पढ़ रहा था, तब I was in New York. हमारे बुद्धिजीवी जो इधर हैं उस पर हंसी मजाक उड़ा रहा था, ये क्या गंवारपन है, असली काम करो, ये घंटा बजाने से थोड़ी कुछ घंटा होगा। एंड यू नो, आई वाज सो हर्ट बाय दिस बिकॉज आई वाज सिटिंग इन न्यूयॉर्क, और हर दिन 6:30 बजे न्यूयॉर्क में, मैनहट्टन में घंटा बजाते थे, बर्तन बजाते थे, हॉर्न बजाते थे। न्यूयॉर्क मेयर हैड टोल्ड देम एवरी डे एट 6:30 PM, जब at that time COVID infection was at its maximum in the world in New York, हर दिन
every day, at the peak, number of deaths in one city, in New York, was more than 1,000. अभी भी हडसन रिवर के तट पर देर आर रेफ्रिजरेटेड, बड़े बड़े ट्रक्स हैं, रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स, उसमें क्या है? डेड बॉडीज हैं, कोई क्लेम नहीं किया है। हम लोग को कैसे पता चला? जो ट्रक के मालिक हैं बोले भाई अब तो हमारा ट्रक वापस करो, बॉडीज को जलाओ। एट दैट टाइम न्यूयॉर्क मेयर हैड सेड, अब नाउ माय फीलिंग इज पीपल डिड नॉट नो दिस। हम जब बताए इंडियंस को, उनको पता नहीं था ऐसा, अच्छा ऐसा हुआ है। आई कैन टेल यू विद गारंटी, वो सेम बुद्धिजीवी अगर उनको पता चलता कि न्यूयॉर्क में ऐसा होता है, तब वो चुप हो जाते हैं। अरे भाई आपको क्रिटिसाइज करना है तो इधर भी क्रिटिसाइज करो, न्यूयॉर्क वालों को भी क्रिटिसाइज करो, वहां भी बोलो कि ये क्या गंवार जैसे व्यवहार कर रहे हो। नो, गोरे लोग कर रहे हैं, न्यूयॉर्क में हो रहा है, तब तो ठीक होगा। यहां का सरकार बोलेगा और तब तो वो गंवार है। क्यों? Why do we feel that? Because I have low self-esteem, I don't have faith in myself, so anything connected to me also must be bad. जो दूसरा है that must be good. New York must be good. New Delhi can't be good. क्यों? New Delhi अपना है, खराब होगा, हम तो बुरे हैं, ये मेरा अपना भी बुरा होगा। So this श्रद्धा in your own culture. I'll tell you one more thing. छोटी सी चीज। I was just finishing the course in Harvard University. COVID attack तब हुआ पहली, and Harvard was one of the first to shut down. So they called me, one of them from the Harvard Divinity School called me and said, Swami ji कुछ ये बताइए, do you have any prayer in Hinduism to against disease? हम बोले क्या प्रेयर, हमको तो बस वो कॉमन प्रेयर सबको जो पता है, महामृत्युंजय मंत्र, त्र्यंबकम यजामहे, तो वही हमको सूझा, हम बता दिया उनको। दिस इज नाइस, व्हाट इज द ट्रांसलेशन? एंड ट्रांसलेशन बोल दिया, उनको बहुत अच्छा लगा, बोले कि आप लिख के भेज सकते हैं हमको। आई सेंट इट। 2 दिन बाद वो फिर फोन किए, अपना पिक्चर एक भेजिए ना। सो आई सेंट वन पिक्चर। यू नो व्हाट दे डिड? हार्वर्ड डिविनिटी स्कूल का उनका जो समर मैगजीन है, इफ यू सी इवन नाउ, बैक कवर में, फुल कवर, दे गेव महामृत्युंजय मंत्र, ओरिजिनल संस्कृत, इंग्लिश ट्रांसलेशन, एंड दे पुट माय पिक्चर ऑल्सो। तो ये दूसरों का कोई कल्चर का एस्पेक्ट, इस पर श्रद्धा कैसे आता है? बिकॉज यू हैव श्रद्धा ऑन योरसेल्फ। वही महामृत्युंजय मंत्र इधर बोलो कोई बड़े यूनिवर्सिटी के बुद्धिजीवी को हंस देंगे, बोले क्या गंवार की जैसे बात कर रहे हो, ये सुपरस्टिशन है। आप इसको नहीं भी मान सकते हैं, बट रेस्पेक्ट है। इवन इफ दे क्रिटिसाइज समथिंग एट हार्वर्ड और येल और प्रिंसटन, दे डू इट विथ रेस्पेक्ट। उसका पूरा सीरियसनेस से लेके स्वामी, आई एम एक्चुअली कोटिंग स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद सेज लैक ऑफ फेथ इन वन सेल्फ, उसका मैनिफेस्टेशन सिम्टम क्या है? इट सेज दिस terrible tendency to ridicule everything. It's there in the language. Terrible tendency to ridicule everything. This tendency to make fun of everything. This terrible loss of seriousness. वहाँ I have noticed in the universities full freedom है and full seriousness है. Nobody is going to tell you anything in those universities. कोई नहीं रोकेगा, कोई रोक टोक कुछ भी नहीं है. But full freedom and everything is maintained perfectly. So this comes from respect. Respect for myself, respect for the other person, respect for society, culture and nation. ठीक. So ये पहला शब्द है श्रद्धा. Now we will take a few questions before I go to the next one. एकाग्रता. हाथ उठाइए, वो volunteers हैं, आपके पास ले जाएंगे. We'll go to that lady there at the back जो हाथ उठाई थी. आप देखें उस रो में, आप खड़े हो जाइए. Yes, you. They will take a microphone to you. Tell us your question. Tell us your name and your question in brief. Yes, my name is Amala Haidar. My question is about living purposefully. So you told us that we should choose our goal and our belief. And if it doesn't, my question is, if it doesn't align with the 100 people around you, and they keep claiming that it is bound to fail, you also have doubts in your mind that 10 years down the line, I might regret my purpose. So how to find a solution to that? It's very easy. I remember, microphone let's see. How to find a solution to that? The answer is pretty easy. If it is something that you want, if it's something that you want, you have tried it for 10 years, suppose it fails, you will not regret it.
because you did what you wanted. Now suppose you give it up from now on and do what others are telling you to do, you will surely regret it. Because 10 years later you will feel, 20 years later, जो मैं चाहता था, जो मैं चाहती थी वो नहीं कर पाई. I should have been brave. I should have done what I wanted to do. Think well about it, and then don't be rash. I remember when I was a student, I wanted to become a sannyasi. तब पता नहीं था कि मैं कर पाऊंगा या नहीं. I mean, such a big thing, and I was a young student, college student. But one thing I knew, I wanted so badly, if I don't become a monk, if I don't become a sannyasi, at the end of my life, I will regret it. मैंने एक सीनियर साधु जी से, स्वामी जी से कहा था, one reason for becoming a monk is if I don't become a monk, I want it so much. If I don't become a monk, I will feel sorry at the end of my life that I did not try it. And of course, intelligently, listen to everybody. What are the pros and cons, possibility of success and failure? Do something which you really want and which is again within some capacity, which is sort of at least a little bit reasonable, not totally crazy. Okay, then somebody from this side, this gentleman here. And then we will go to the lady, you, after him. Tell us your name and ask the question. My name is Chetan. I am a college student. My doubt is regarding the self-confidence. That how should I avoid the comparison from others? Yes, that's a very important thing. Self-acceptance, ये मैं कहना भूल गया. It's a very good question that he has asked. बैठिए. जिस book से मैं quote कर रहा था, Nathaniel Branden. If you're interested, just look it up. 6 Pillars of Self-Esteem. उसमें वो he has actually mentioned that. उस self-acceptance जहाँ मैंने कहा ना, वहाँ पर he says, don't ever compare with other people. What will stop you from self-acceptance is trying to compare yourself with others. That's absolute nonsense. वो इतना अच्छा है, उसका Facebook likes बहुत ज़्यादा है, मेरा कम है. There is no way to win this game. Nobody can win this game. This is a trick of the mind to keep on comparing to others and making yourself miserable. No, I accept myself as I am. Then only I can become better. Self-acceptance का एक part है, strictly don't compare. Notice one more thing. The language in which these 6 pillars have been stated. देखो language में हर जगह practice कहा गया. कोई बोलेगा living consciously, वो मेरा तो नहीं है स्वामी जी. No, he says practice living consciously. तो practice तो हम कर सकते हैं, थोड़ा बहुत भी कर सकते हैं. मेरा personal acceptance नहीं है, मैं बहुत compare करता हूँ दूसरों से. He says no, practice self-acceptance. तो उठकर अभी लगो, कोशिश करो कि I will not think about others. I'll think about myself. कैसा हूँ, इससे कैसे बेहतर हो सकता हूँ. This is a practice. All of these are practices. Living consciously, self-acceptance, self-responsibility, self-assertiveness, living purposefully, and living with personal integrity. All of them are practice. They are action words, not quality. हम में है नहीं है क्या करूँ? नहीं. Do it. The lady who raised her, please stand up. Tell us your name and ask the question. Hi, Sanji. I'm Anuriti Paul. I'm currently studying positive psychology from California. And part of what I've seen is Indian students have, like India in general, has this idea of modernity, which is very much looking towards the West. So how would you say that we shift that perspective and integrate our own yoga psychology into how we are educated in our country? Right. Where are you studying in California? California Institute of Intuitive Studies. Good. So you have a perspective on what I have just said. You see the truth of that. Yeah. Thank you for that question. We think that the West is modern, therefore it is good. What I noticed there is that whatever starts there is quickly, nowadays in the age of internet, is quickly, within 15 days, 1 month is copied here. Many of those things are good. Many of those things are really good. But मेरा ये प्रश्न है, अच्छा तो है, लेकिन एक भी ऐसा चीज दिखाओ जो यहाँ शुरू हो रहा है उधर कॉपी हो रहा है, कुछ भी नहीं. यहाँ का चीज जो उधर कॉपी हो रहा है वो सब हमारा एंशिएंट कल्चर का अंग है. वो वेदांत हो, योग हो, और आयुर्वेद हो.
Because that's your original contribution. You have got that to give. Therefore, people are accepting. Abhi, why don't we have something which we can give others? Because we are not thinking originally. We are trying to copy them. तो हम copy करके जो second rate copy इधर बनाएंगे, वो थोड़ी उधर लेंगे उधर. It must be original. We are immediately copying the West. Because, as she said, we have this tendency that if it's coming from there, it somehow must be superior. Somehow must be good. Even if it is good and superior, we should take it in our own way. I've got many such examples to show how we have wrongly adopted things, just blindly copied. बोलना तो नहीं चाहिए, but I'll tell you. I saw in YouTube, वो आजकल पॉपुलर हुआ है, स्टैंड अप कॉमेडी होता है इधर. So nice, very funny. I also watch it. But I noticed one thing. Jokes, stage, body language और audience का जो वू बोलना, वो सब उसका कॉपी है. टोटल नकल. वहीं का जोक इधर थोड़ा सा मॉडिफाई करके, वहीं का बॉडी लैंग्वेज इधर, वहीं का ऑडियंस रिएक्शन इधर. Why? So this shows, K.C. Bhattacharya was a great philosopher in the 20th century in Calcutta. He talked about the shadow mind. Shadow mind, he said at that time, वो independence से पहले, he has got this lecture, Swaraj in Ideas. देखो कितना interesting concept. Swaraj in Ideas. सिर्फ political Swaraj नहीं, Swaraj in Ideas. He says, it will be that the colonizing power will leave these shores in no time. British चले जाएंगे. But they will remain in our minds. Because our minds have been colonized. So this is an effect of colonization. जहाँ पर भी colonization हुआ है वो उधर हुआ है. In many cases, those original cultures have been wiped out. In South America, in parts of Africa, we have not been wiped out because our culture is very deep and strong. लेकिन it has been distorted. And then he said, to answer your question, K.C. Bhattacharya said, what is the sign of a colonized mind? It is lack of creativity. Because everything is copied. So it's lack of creativity. And he gave an example. वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल दिए. He said, when an Oxford literature dawned, Oxford के प्रोफेसर शेक्सपियर के बारे में लिखते हैं, एक तरीके से लिखते हैं. इंग्लिश चैनल क्रॉस करो, एक फ्रेंच प्रोफेसर जब शेक्सपियर के बारे में लिखते हैं, दूसरे तरीके से लिखते हैं, फ्रॉम द फ्रेंच पर्सपेक्टिव. तो कितना फर्क होना चाहिए. 7 समुंदर पार ये आके कलकत्ता यूनिवर्सिटी के इंग्लिश के प्रोफेसर जब शेक्सपियर के बारे में लिखेंगे, कितनी भारतीय तरीके से उसको सोच के लिखेंगे. नो, यहाँ के प्रोफेसर जो हैं वो ऑक्सफोर्ड प्रोफेसर जो उसका एक सेकंड रेट कॉपी यहाँ पर बना देते हैं. कोई ओरिजिनल रिएक्शन नहीं है. औरोबिंदो जब इंग्लैंड से पढ़कर आए, उनको ऐसे पाल पोस के बड़ा किया गया था कि वो बंगाली थे, एक शब्द बंगाली नहीं जानते थे. His parents thought he should be totally English. उसको इंग्लिश गवर्नेंस था, उनको विदेश भेज दिया गया. वो कहाँ, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में पढ़े इंग्लिश लिटरेचर. ही केम बैक, शायद ग्वालियर कहीं पर वो पढ़ाते थे कॉलेज में पहले, बड़ोदरा हाँ पढ़ाते थे. राजा बड़ौदा गिव हिम एम्प्लॉयमेंट देयर. ब्रिटिश एजुकेटेड प्रोफेसर हैं, तो उनका अपना लिखा हुआ है. वो जब पढ़ा रहे हैं, ही इज ओन राइटिंग, वो चौंक जा रहे. वो तो इंडिया इस तरह से देखे नहीं थे, वो तो इंग्लैंड में बढ़े हुए हैं कि ये सब हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं. एक सिलेबस, इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस, इंग्लिश राइटर्स, इंग्लिश पोएट्स जो कैम्ब्रिज में बनाया गया है, ऑक्सफोर्ड में सिलेबस बनाया गया, उसका एकदम टोटल कॉपी इधर बड़ौदा में गांव से लोग आए हुए हैं लड़के, वो उनको पढ़ा रहे जो उनके लाइफ के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, उनके देश के साथ, उनके रिलीजन के साथ कोई कनेक्शन नहीं है. वो हम जो पढ़ा रहे हैं उसका पूरा बोले सर नोट दे दीजिए, तो नोट याद रट के उसको एग्जाम में लिख रहे हैं. वो कैम्ब्रिज का जो एजुकेशन सिस्टम वो ठीक है, उधर एकदम ठीक है, वहाँ जचता है, वहाँ बैठता है. लेकिन यहाँ आके इट बिकम्स अ पैरोडी, इट बिकम्स अ फार्स. तो ये क्यों करें, उनको हमको समझ में नहीं आ रहा है. व्हाई आर वी डूइंग दिस? मेरा एक्सपर्टीज है, आई हैव लर्नड दिस, बट आई डोंट सी दैट व्हाई आई हैव टू टीच दीज थिंग्स टू दीज बॉयज. So it's because it's a shadow mind, a copy from there, no originality. How do you get originality? First, double down. It's sorry that I have to speak in English to you. This is the situation we are in. But let's also learn our mother tongues. Let's also
bring in as much Indian input into our syllabus, into our work culture, into our stand-up comedy also. As much Indian input as possible. और देखो तब कितना जमेगा और कितना it will be appreciated across the world. Already it is happening. छोटी छोटी चीज जैसे I'll give you one more example. You might be surprised. Bollywood. It is appreciated more and more across the world. Even films you may consider silly or sensationalized, like it's highly appreciated. I attended a talk by Fatima Bhutto. She is the niece of Benazir Bhutto. Harvard University mein she came to give a talk at Harvard bookstore. She's launching a new book on how South Asian, third world entertainment industry is defeating Hollywood. तो वो बोल रही हैं कि बॉलीवुड के सिनेमा, बॉलीवुड के गाने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, अफ्रीका में, साउथ अमेरिका, जहाँ इंडियन कम्युनिटी नहीं है, फिर भी वो लोग सुनते हैं. देन शी सेड टर्की के ड्रामा जो हैं वो मेनी मुस्लिम कंट्रीज में इट्स वेरी पॉपुलर, मोर देन हॉलीवुड सिनेमा, हॉलीवुड टीवी सीरियल जो पहले था, अभी वो चेंज हो रहा है. इट्स बिकॉज देयर इज मोर ओरिजिनलिटी नाउ, इट्स मोर अट्रैक्टिव नाउ. And people across the world, they feel more identified with India, with Asian culture, Indian culture, rather than with Hollywood culture. This is one sign. Okay, one more question, then we'll go on to the next part. बहुत सारा, no, let me go from someone from that side. That gentleman there? Yeah, yes, you. Mike there, it's on your left. Tell us your name and ask the question. Hello, Sean. I am Vishweshwar. I'm from Varanasi. I have two questions regarding the purposeful life. The first one is, does the purpose in our life need to be aligned? Need to be aligned. Okay, speak loudly. I'll be able to hear. Need to be aligned with spirituality, because if someone his purpose is to make money and goes after money, someday he will be tired and it will be meaningless. So, what? Yeah, should it be aligned with? Correct. I'll just take that much of a question. We don't have much time. Good question. Yes, the answer in one word is yes. Sri Ramakrishna used to say that if you collect lot of zeros, what will you get total? Zero. But if you have one, more zeros you add to it, more value it will increase. And if you don't add any zeros to it, one will still have value. That one is spirituality. And spirituality in the most broadest sense. Nowadays I tell people that I stayed in 3 interesting places in the last few years. One was in California where she is studying. I was in Hollywood for 1 year. Then last few years I have been in Manhattan, just close to Wall Street. And then I spent 1 year at Harvard University in Boston. 3 places, 3 ideas of success, 3 shining goals in American life. एक है हॉलीवुड का ग्लैमर, फिल्म इंडस्ट्री. एक है वॉल स्ट्रीट, वहाँ पैसा, बिलियनियर, एंड देयर होल रो ऑफ बिल्डिंग्स, यू विल सी देयर बिलियनियर्स रो. बिलियनियर से कम कोई रह नहीं सकता उधर. मनी. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इज लर्निंग इंटेलेक्चुअल लाइफ. आप आर यू अ बेस्ट सेलिंग ऑथर ऑफ अ टेक्स्ट बुक? आर यू अ नोबेल प्राइज विनर? I noticed one thing in all these places, that there's a great deal of unhappiness, dissatisfaction. Is nobody happy? There are people who are happy and satisfied. Only those people who have that one, some type of spirituality. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वेदांत, could be Christianity, could be Buddhist mindfulness meditation, could be service to others. Some form of spirituality is there. Then only, whether Hollywood glamour or Wall Street money or Harvard University learning and Nobel Prize, all of those are zeros which you add and you will get satisfaction, depth. तो my goal is earning money. ठीक है, देख लेते हैं, उसके बाद स्वामी जी स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे. रिटायरमेंट के बाद बहुत देर हो जाती है. And it's a long path and full of suffering. Why will you suffer? So keep spirituality from the very beginning. Have meditation in your life. Have study of Upanishads and Gita in your life. Have some kind of devotion. वो चाहे राम की हो, कृष्ण को हो, रामकृष्ण को हो, जैसे भी, whatever your religion, your belief is. Devotion, faith. And have some selfless service in your life. The 4 yogas. Jnana yoga, bhakti yoga, raja yoga, karma yoga.
थोड़ा सा रखो अपने लाइफ में. You will see very soon that this is the one. बाकी सब zero है. Let the zero be there. Value addition होगा. Zero नहीं होगा. ठीक है. At one time that will not matter. All right. Now let me go on to the second part of the presentation, which is the second word, ekagrata. Just as Swami Vivekananda had spoken about the importance of Shraddha, faith in yourself, he has spoken about the power of concentration. As he said, difference between a great person and ordinary person lies in difference of Shraddha. Difference between great person and ordinary person lies in the power of concentration, power of focus. He has said that also. The key to all knowledge lies in concentration. Swami Vivekananda has said this. One thing I noticed, that wherever there is success in academics, in work sphere, there is the power of concentration. There is the power of focus. मैं यहीं पर आता था आज से करीब 9 साल पहले, 10 साल पहले, IIT कानपुर में to give talks. And wherever I go, I like to go to the library and meet students and watch students studying. I'd like to watch scholars at work. मैं जब हार्वर्ड में भी था, I used to do not only study there, but more than study, I would go and attend different classes wherever I heard they were good teachers. You know, how they are teaching. What they are teaching is interesting, plus how they are teaching. And also I would watch these very smart young men and women, the students at Harvard University, how they studied. I watched it in IIT Kanpur. I watched it in other institutes in India, in the United States, and of course at Harvard also. One thing I noticed common to all of them, all these good students, scholars, professors, they have this enormous power of focus, of concentration, of paying attention. IIT में एक बार, I still remember, I was so impressed that I went to the IIT Kanpur में library में सुबह गया to sat down to study. I watched a group of students studying सुबह 8 and 9 बजे. I studied for some time, then I went to my room, took a bath, went to lunch, came back, took a little rest, then came back to the library in the afternoon. That group of students was exactly there, unmoving. Until the evening I saw them working. 8, 9, 10 hours straight वहीं पर बैठे हुए हैं. So much focus, continuous focus. I once went to another engineering college, which is not well known. I was taken on a tour, and I was shown the very nice computer department, but empty. And I asked, तो यहाँ students पढ़ते नहीं? Don't you allow students here? And the professor said, it's open. If students want, they can come and work in this lab. तो कहाँ गए? वो सब घर चले गए, घूमने चले गए. Then when I met the students, I told them, see, I saw IIT Kanpur and I'm seeing you. The difference is not that वो IIT है और ये नहीं है. Difference is not that उनका बहुत पहुंचे हुए प्रोफेसर्स हैं और आपके प्रोफेसर्स नालायक है. ऐसा नहीं है. ऐसा भी नहीं है कि वहाँ बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, आपकी फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है. नहीं है वो, नॉट इवन दैट. तो दे वर लाइक, हाँ अब आप हमको ब्लेम करेंगे कि हम लोग ब्रिलियंट नहीं है. वो लोग, इट्स नॉट इवन दैट दे आर ब्रिलियंट एंड यू आर नॉट ब्रिलियंट. दे हैव अ पावर विच यू हैव, दे आर यूजिंग दैट पावर, यू आर नॉट यूजिंग दैट पावर. दैट्स ऑल. इतना ही फर्क है, बस, और कुछ नहीं है. I saw them studying like that, and then I asked some of the students, I was so impressed to see your classmates, they are studying 7-8 घंटा एक जगह बैठ के पढ़ रहे हैं. And they said, स्वामी जी ये तो आप कुछ भी नहीं है. एग्जाम टाइम में आप आइए, you will see 24, literally 24 hours. चला गया, अब लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा है, शाम हो गई, रात हो गई, whole night, from the next early morning has been going on, then next day morning, वो लाइब्रेरी का बाथरूम में जाके ब्रश करके साइकिल पर बैठ के चला गया एग्जाम हॉल में. 24 hours in one library at one stretch. And then I told those students, ये पावर आप में भी है, हम में भी है, हम लोग यूज नहीं करते, वो लोग यूज कर रहे हैं. This is the only difference. I have seen some Swamijis who have that power. I don't have that much power, but that some Swamijis have that power of concentration. One of the most brilliant
students I've met, he's a monk, a friend of mine, वो IIT JEE के ऑल इंडिया सेकंड थे. USA में बोलने से किसी को पता नहीं चलेगा क्या है IIT JEE के ऑल इंडिया सेकंड, but everybody recognizes here how rare that is. And he was a topper of IIT Kanpur. He's a monk, very brilliant person, one of the most brilliant person I've met. But one characteristic I have seen, tremendous power of concentration. वो brilliance तो ठीक है, but tremendous power of concentration. एक बार किताब पढ़ रहे हैं, and I walked past him, I still remember. वो पैर फैला के बैठे हुए बिस्तर पर एक पढ़ रहे हैं. तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या पढ़ रहे हैं? No reply. I'm standing in front of him and asking, what are you reading? No reply. क्या पढ़ रहे हैं आप? No reply. वो पैर फैला के बैठे हुए थे. I caught hold of his big toe, ऐसे पकड़ के I shook it. महाराज क्या पढ़ रहे हैं? He cannot feel me touching his body. Imagine. And then I went and picked up the book to see the book. वो चौंक गए. Now imagine that kind of concentration. He has got it everywhere. जो भी काम करते हैं वो वैसे पढ़ते हैं वो. I have seen another monk, also IIT Kanpur product. He is one of India's leading mathematicians. भटनागर अवार्ड मिला है, इन्फोसिस अवार्ड मिला, ये सब मिला है. उनको I have seen him working. दिन भर वो काम कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट पर, एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम पर. रात में वो ऑफिस में फ्लोर पर, I got a shock because I went into the office to see him, he was sleeping on the floor. नींद जब टूट जाएगी, he'll get up and start working again. One of these monks I have seen, रात भर काम कर रहे हैं on some project, और वो दरवान हमको बताया आश्रम विद्या मंदिर. उस महाराज, आपके दोस्त जो महाराज हैं, उनको देखा मैंने रात 1:30 बजे जा रहे हैं डाइनिंग हॉल की ओर. तो मैंने पूछा, महाराज जी आप कहाँ जा रहे हैं? ओ डाइनिंग हॉल. अब कहाँ खाना मिलेगा, आप सब बंद है? तो अच्छा बंद है, अच्छा ठीक है. ही वेंट बैक टू हिज, एग्जैक्टली दिस इज द वर्ड्स. उनको पता ही नहीं कि रात के 1:30 बज चुका है, खाया नहीं दिन भर. दिस इज द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. तो इससे नहीं होगा तो और क्या होगा? स्वामी विवेकानंद सेज दिस इज द की टू ऑल नॉलेज. अब कोई बोलेगा ये आपके योगी स्वामी जी ये सब बोलते हैं. नहीं, द पीपल हु आर क्रिटिक्स, नॉलेज डज नॉट कम फ्रॉम दैट. साइंस का नॉलेज ऐसे एक्सपेरिमेंट से होता है, हाइपोथेसिस से होता है, टीम बिल्डिंग से होता है. इट्स अ टीम एफर्ट, प्रोजेक्ट चलता रहता है, उससे अल्टीमेटली सम नॉलेज कम्स आउट. आई रेड वॉन नॉयमन, वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट फिजिसिस्ट ऑफ द 20th century. उनका एक बायोग्राफिकल थोड़ा पढ़ रहा था. The author has written, John von Neumann, he was convinced he could crack any problem in physics with the sheer power of his concentration. उनको ऐसा लगता था. हम जहाँ रहते हैं उससे थोड़ी दूर है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एक छोटा सा इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज. सम ऑफ द कलेक्शन ऑफ द बेस्ट ब्रेन्स इन द वर्ल्ड दे स्टे देयर. वहीं पर आइंस्टाइन थे till the end of his life. वहीं पर Kurt Gödel, the greatest mathematician of that time, he was there. Von Neumann was there. Oppenheimer was there. आधा लोग तो वहाँ नोबेल प्राइज विनर हैं, बाकी आधा फील्ड्स मेडल विनर हैं. बट वन थिंग आई नोटिस्ड देयर इन दैट इंस्टीट्यूट, बहुत सिंपल सा इंस्टीट्यूट है, बट जिसको पिन ड्रॉप साइलेंस कहते हैं, अमेजिंग. होल इंस्टीट्यूट ऑल द टाइम स्टिल. आपको जोर से बात करने का साहस भी नहीं होगा उधर. वाई स्टिल? जस्ट बिकॉज द साइंटिस्ट्स, मैथमेटिशियंस आर वर्किंग, दे शुड नॉट बी डिस्टर्ब. उनका जो चिंता आ रही है, इट शुड नॉट बी डिस्टर्ब. कोई पूरा इंस्टीट्यूट में हॉर्न बजा ले कि किसी के मजाल है? नहीं, नो क्वेश्चन. तो कोई आता है हमको घुमाने ले जाता है, पास में आइंस्टाइन का घर है, वो भी दिखा देते हैं. उधर जाते हैं अंदर, तो जो उधर रिसेप्शनिस्ट हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, दे विल टेल अस यू कैन गो एट द मैक्सिमम अप टू द कॉरिडोर. वहाँ पर घूम के देखिए, डोंट गो अपस्टेयर्स. तो जहाँ साइंटिस्ट आर वर्किंग, डोंट गो देयर. देयर मस्ट बी नो डिस्टर्बेंस एवर. क्यों? फोकस शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड. सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फोकस. अब कैसे करें फोकस? इज देयर एनी वे टू डू इट? ऑल ऑफ अस हैव दैट पावर. अब देखो, बच्चा जो सबसे नटखट है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, स्कूल किड क्लास 5-6 में पढ़ता है, उसको पढ़ाई करने बोलो, वो इतना रेस्टलेस है. उसका फेवरेट कार्टून या टीवी सीरियल चला दो, बैठ के देखेगा until the end of the show. मच्छर काट रहा है, गर्मी है, कोई परवाह नहीं, देखता है. अब उसको बोलो आप जाओ बेटा होमवर्क करो, बहुत बोरिंग है, गर्मी है, मच्छर है, हमको नहीं पढ़ सकते हम.
So what happened? That same power of concentration is there, but it's not under our control. जहाँ interest है, अच्छा लगता है, वहाँ चला जाता है. जहाँ interest नहीं है, अच्छा नहीं लगता है. Although I know this is important, I have to do it, but I can't do it. Because that power of concentration is not at my command. Swami Vivekananda said, if I had to do my education all over again, I would develop the power of attachment and detachment. कैसे अपने आप को fully, how I can throw into one subject, पढ़ेंगे, फिर या करेंगे वो काम, and then pull out from there completely and throw into another one. That power, that is the power of concentration, that power we have. One of the richest people in America, Warren Buffett, is the head of this investment company. So सब लोग उससे पूछ रहे थे, आपका secret क्या है? Everybody wants to be rich in America. Huh? So आपका secret क्या है? How did you become so rich? And he said, I have a secret. And I can tell you, you can also do it. But also, you can do it, I know you can do it. But I also know that you will not do it. नहीं करोगे तुम लोग. वो क्या है secret? He says, I read 500 pages a day. हर दिन 500 पेज में पढ़ता हूँ. Mostly related to his business. Just that reading daily. 12-14 घंटा में पढ़ता रहता हूँ. उससे हमको जो आइडियाज आते हैं उससे ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स अपने आप हो जाती है. So focus on one thing. How do you do that? Swami Vivekananda says, do whatever you are doing with the fullest possible attention. This is a formula for focus. Do whatever you are doing with the fullest possible attention. ऐसा कोई meditation technique नहीं बता रहे. He's saying whatever you are doing in life, do it with the fullest possible attention. जितना attention हो सके, do that, hold it there. We might think, why do everything with the fullest possible attention? Because if I want to study, do my assignments, do my work in the company, yes, full attention. इंटरनेट ब्राउजिंग कर रहे हैं, दोस्त से बात कर रहे हैं, महाराज जी का भाषण सुन रहे हैं, तो थोड़ा बहुत सुनेंगे, कुछ दूसरा करेंगे, मोबाइल चेक करेंगे. Why fullest attention? क्या जरूरत है? स्वामी विवेकानंद answers, remember, it is the same mind. आपका एक ही मन है, आपका मेरा सबका एक ही मन है. We each of us, we have one mind. What does it mean? If you let it loose throughout the day, दिन भर जो मन बोला मैं वही करता गया. चलो थोड़ा आके आइसक्रीम पार्लर से आइसक्रीम खा के आ जाए, थोड़ा इंटरनेट ब्राउजिंग कर ले, थोड़ा सोशल मीडिया पर चले जाए, थोड़ा काम भी कर ले, थोड़ा घूम के आ जाए. Whatever the mind wants, I am doing that. जब रात हुआ, अभी टाइम डेडलाइन आ रहा है असाइनमेंट का, आप बोल रहे हैं माइंड को, भाई अभी रात में पढ़ना है आज. Always we think, I was also a school and college student, कर लेंगे बाद में, रात में कर लेंगे, I'll finish the work. अभी तो मजा करें. जब रात आएगी 10 o'clock, 10:30, and you tell the mind, अब चलो खत्म करना है, the mind will say, बहुत नींद आ रही है, कल सुबह कर लेंगे उठ के. कभी नहीं उठोगे कल सुबह. Now what has happened? The mind which is left to relax throughout the day, do whatever it wants. When you want it to do, अभी ये चलो ये फिजिक्स करना है या कोई असाइनमेंट करना है, माइंड विल से वेरी बोरिंग, आई वोंट डू इट, नहीं करेंगे. बिकॉज आई एम यूज्ड टू बीइंग एंटरटेन्ड. दिन भर मजा लूटा, अब तुम बोल रहे हो ये घटिया काम करने के लिए हम नहीं करेंगे. द माइंड विल रेबल, विल नॉट डू इट. इट्स नॉट ट्रेन्ड टू पे अटेंशन. अब इफ यू मेक इट अ हैबिट टू पे अटेंशन इन डूइंग वॉट एवर यू आर डूइंग. और जिस महाराज जी को मैंने जिनके बारे में बताया, उनको आई हैव सीन हिम क्लीनिंग हिज ओन रूम, साफ कर रहे हैं, छोटा सा घर. आई एम अमेज्ड टू सी कितना अटेंशन से हर एक विंडो का ग्रिल साफ कर रहे हैं बैठ के. वो जानबूझ के प्रैक्टिस नहीं कर रहे, उनका हैबिट है, उनका वर्क एथिक है, उनका काम का क्वालिटी वही है. हर चीज वो अटेंशन से करते हैं. तो ये बोरिंग नहीं होगा? नहीं. अटेंशन इज नॉट बोरिंग, कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट बोरिंग, डिस्ट्रैक्शन इज बोरिंग. दिस इज एन इंटरेस्टिंग थिंग. स्टूडेंट्स पूछे कि अच्छा आप बोल रहे हैं आईआईटी के लड़के 7-8-9 घंटा बैठ के पढ़ते हैं, तो ये बोरिंग है बहुत. नहीं, बोरिंग क्या है कि मैं पढ़ने बैठा हूँ, उसके साथ मेरा मोबाइल भी ऑन है, उसके साथ कान में गाना भी बज रहा है. क्यों? इसके विदाउट दिस आई कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट. नो, दैट विल बिकम बोरिंग बिकॉज इट विल बिकम अ फाइट. ये मटीरियल थोड़ा डिफिकल्ट है, बोरिंग है, उस पर मैं कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ और 4-5 अट्रैक्टिव ऑप्शंस हैं, देन इट विल बिकम बोरिंग. यू कट आउट ऑल ऑप्शंस and concentrate on the material only. Fullest possible attention to whatever you are doing. Swami Vivekananda, यहाँ पर क्या रामकृष्ण मिशन का लोगो है? इधर उधर है. You can see that. That is the logo of the Ramakrishna Math and Mission.
It was designed by Swami Vivekananda. And where I am now in the Vedanta Society of New York, वहीं पर एक बार एक प्रिंटर जो स्वामी विवेकानंद के लेक्चर्स वहाँ छपवा रहे थे, सुबह सुबह आए स्वामी जी से, he was a Dutchman. He said to Swami Vivekananda, it will be nice to have a logo, एक सिंबल आपके लेक्चर्स पर अगर लगा देंगे तो अच्छा होगा, आप कुछ दीजिए हमको. एंड स्वामी विवेकानंद, उसका वर्णन है, वहीं पर एक कागज लेके he just sketched out something and he threw it across, he tossed it across the table and said, draw it to scale. ये था. And it became the logo of the Ramakrishna mission जो आज तक यूज करते हैं. Then he explained, इसका मीनिंग क्या है, that the sun represents knowledge, ज्ञान, the water represents work, karma, the blooming lotus represents bhakti, devotion, and that swan in the middle ये परमात्मा है. परमात्मा कैसे मिलेंगे? ये चारों के कॉम्बिनेशन से. फोर्थ क्या है? दैट स्नेक विच यू सी, जो सर्प है, कोबरा है, encircling the whole thing. What does it represent? हम लोग बोलते हैं कुंडलिनी शक्ति वगैरह, स्वामी विवेकानंद तो खुद बोले हैं, it means concentration. ज्ञान, भक्ति, कर्म और एकाग्रता, concentration के माध्यम से, जब concentration when it becomes yoga, meaning concentration when it becomes yoked to knowledge, devotion and service, it leads to realization of God. आपको एकाग्रता से भगवान तक मिल सकते हैं. So, how do you do that? What does that snake mean? And I got the answer from a psychologist. एक book लिखे हैं Winifred Gallagher, it's called Rapt, R-A-P-T, Rapt, मतलब एकदम absorbed होना किसी चीज में. She says the best example, best symbol of concentration is a cobra. वो शायद नहीं जानते रामकृष्ण मिशन के बारे में, विवेकानंद के बारे में. वो बोल रहे कॉन्सेंट्रेशन का सिंबल है कोबरा. कैसे? आप ये तीन चीज देख लो. कोबरा हैज दिस पियर्सिंग, फियर्स, लेजर लाइक फोकस ऑन इट्स प्रे. किसी चूहे का या मेंढक को पकड़ रहा है तो उस पर एकदम तीखा नजर से देख रहा है उसको. अनवेवरिंग लेजर लाइक फोकस, स्टेप 1. अनवेवरिंग लेजर लाइक फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट, स्टेप 1. स्टेप 2, होल्ड इट. हम लोगों का फोकस तो आ जाता है लेकिन चला भी जाता है. 10 सेकंड कॉन्सेंट्रेट सब लोग कर सकते हैं, 10 घंटा. सो होल्ड इट. वेवर कर रहा है, इधर उधर जा रहा है, ब्रिंग इट बैक, होल्ड इट, जस्ट लाइक द कोबरा होल्ड्स दैट गेज. थर्ड, जो हुड ऑफ द कोबरा, मीनिंग ऑफ दैट एक्चुअली बायोलॉजिकल मीनिंग कुछ दूसरा है. द कोबरा डज इट टू बिकम इंटिमिडेटिंग, बट यहां सिंबॉलिकली मीनिंग है कटिंग ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. In order to concentrate on one thing, you must cut off everything else. This positive psychologist, a lot of people have worked on concentration. They say this is most important. One must cut out everything else. तो ये कैसा है? जैसे बच्चे पढ़ते हैं कभी कभी, अब देखें छोटे बच्चे पढ़ते हैं जो बहुत सीरियसली पढ़ रहे हैं, ऐसे पढ़ते हैं. यानी ये क्या है? कटिंग आउट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. हम कुछ नहीं देखेंगे, बस यही देखेंगे. कटिंग आउट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. एक महात्मा जी ध्यान सिखा रहे थे. अब देखो थोड़ा मजेदार भी है. बोले कैसे ध्यान करें? पहले हिलो मत. दूसरा, बोलो मत, यानी मन में भी मत बोलो. तीसरा, सोचो मत. हिलो मत, बोलो मत, सोचो मत. वो एक परेड ग्राउंड के सर्जन जैसे बोल रहे हैं. बट बेसिकली इट मीन्स दैट कट ऑफ द एवरीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड. ध्यान कैसे करें? हर जगह ईश्वर देखना है, वो नहीं होता है हमसे. तो एक जगह देखो. कैसे? आपके अपने हृदय में. फिक्स योर माइंड. यहां से बाहर तुम नहीं जाओगे, इससे बाहर कोई चीज के बारे में तुम नहीं सोचोगे. और टाइम में बांध दो कि अब से लेके 30 मिनट्स तक इस टाइम में और कुछ नहीं सोचोगे. ये संकल्प करना है. और तीसरी, वस्तु में बांध दो कि इस ईश्वर की मूर्ति, कृष्ण की मूर्ति, राम की मूर्ति, रामकृष्ण की मूर्ति, देवी की मूर्ति, इससे अलग कोई चीज नहीं सोचोगे तुम. तो आपने इसको देश में बांध दिया, काल में बांध दिया और वस्तु में बांध दिया. टाइम, स्पेस, ऑब्जेक्ट रिस्ट्रिक्शन कर दिया, बांध दिया इसमें. तब मेडिटेशन होगा. यानी बाकी सब यू कट इट आउट. द सेम थिंग अप्लाइज फॉर स्टडीज, सेम थिंग अप्लाइज फॉर योर वर्क इन कॉर्पोरेट्स. आजकल, सो लेट मी कंप्लीट द थॉट. फुलेस्ट पॉसिबल अटेंशन बिकॉज यू हैव वन माइंड ओनली. हमारे सत्यरूपान जी महाराज थे, who just passed away recently. He was the head of our center in Raipur and he used to inspire the youth like anything. So I remember one talk he gave in Belur Math for the youth. इतनी बहुत priceless thing he told.
I still remember, that was like 15 years ago, 16 years ago. He said, he gave that example. आपके पिताजी शेव करते हैं, उनका ब्लेड लेके आप पेंसिल छिलना शुरू कर दो, तो वो ब्लेड से पिताजी शेव कर पाएंगे? तो स्टूडेंट सेड नो, क्यों नहीं कर पाएंगे, ब्लेड तो एक ही है। तो एक ही ब्लेड से आप पेंसिल भी छिलोगे और पिताजी भी शेव करेंगे? नहीं हो सकता है, बिकॉज इट हैज बिकम ब्लंट, उसका एज चला गया है। इसी तरह से हमारा एक ही मन है, जैसे एक ही ब्लेड है, एक ही मन है। इफ यू लेट इट लूज थ्रू आउट द डे, जब आपको कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, फोकस चाहिए, वो नहीं होगा। सो मेक इट अ हैबिट। अपने रिलैक्सेशन में भी कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। फिल्म भी देख रहे हो विथ फुल कॉन्सेंट्रेशन, स्टोरी बुक भी पढ़ रहे हो विथ फुल कॉन्सेंट्रेशन। सो फोकस एंड हैबिट ऑफ फोकस। और दूसरा चीज वो बताते थे सत्यरूपान जी महाराज, सिंपल फॉर्मूला, आई विल टेल यू, विल रिमेंबर योर होल लाइफ। सरलतम से शुरू करो और न्यूनतम का अभ्यास करो। नहीं, न्यूनतम से शुरू करो, सरलतम का अभ्यास करो, एक ही बात है। न्यूनतम से शुरू करो, सरलतम का अभ्यास करो। हाउ शुड बी प्रैक्टिस? स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट एंड प्रैक्टिस द इजीएस्ट। यानी क्या है, जैसे ये मंक्स लोग बहुत सुबह उठते हैं, बेलूर मठ में हम लोग 3:40 को देयर इज अ बेल, और कोई ऑप्शन नहीं है, आप नहीं उठेंगे तो घंटा बजाते जाएगा आपके सामने के पास में। तो यू हैव टू गेट अप एट 3:40। हम सुने, अच्छा, बहुत अच्छा है, सुबह उठने का तो बहुत फायदे हैं। आई विल ऑल्सो गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब कितने बजे उठते हो? 8 बजे। प्लान क्या है? 4 बजे उठेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में। एक दिन शायद हो भी गया, दूसरे दिन हो जाएगा 10 बजे, बिकॉज यू आर मेकिंग टू बिग अ जंप। न्यूनतम से शुरू करो। 8 बजे उठते हो, कोई बात नहीं, स्टार्ट वेक अप एट 7:45। 15 मिनट पहले तो सब कोई उठ सकता है। योर ओन माइंड विल टेल यू, आप तो 8 बजे उठते हैं, कैसे उठोगे आप 4 बजे? वो आपसे नहीं होने वाला है, वो साधु महात्मा की बात है। बट इफ यू से 8 बजे उठते हैं, 7:45 को उठेंगे, हाँ, योर माइंड विल से ठीक है, कैन बी डन, डूएबल। Then after 15 days, make it 7:30. After 15 days, make it 7:15. Make it 7 o'clock. You will get to 6 o'clock, 5:30, 5 very easily. न्यूनतम से शुरू करो। ये जापानीज काइजन का पूरा फिलॉसफी है। Those who study management, incremental improvement. बहुत ज़्यादा जंप नहीं, थोड़ा सा चेंज, but daily. थोड़ा सा चेंज daily, little bit of change daily. वो एक मैनेजमेंट एक्सपर्ट आए हुए थे इन देवघर अबाउट 1997-98 में। He had come to, हम देवघर रामकृष्ण मिशन में थे, there is बाबा वैद्यनाथ मंदिर is there, so this person had come to do pranams, पूजा चढ़ाने आए थे, but he is a well known management consultant. So we asked, आप आए जब हैं तो हमारे स्टूडेंट्स को कुछ बता के जाइए, and he had no time, he was going to the railway station, तो 15 मिनट के लिए कुछ बता के जाइए। And what he said was so amazing till today, more than 20 years have passed, I remember. क्या बताए वो? He went to the students, class 10 students. He said, आप सब, okay, you can do it also. सीधा बैठिए, आराम से. He did this. Do it with me. He said, please raise your hands. Raise your hands even more. और उठाइए, बस ठीक है, हाथ नीचे कर दीजिए। एंड आई हैव शोन यू वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सीक्रेट्स इन ह्यूमन लाइफ। वो क्या है? देखो, जब हमने आपसे कहा, ही टोल्ड द स्टूडेंट्स, आपसे कहा हाथ उठाने के लिए, आप उठाए। फिर हमने आपके से कहा और भी उठाइए, तो आप और थोड़ा सा उठाए। यानी when the first time you raised your hands, you did not raise it to the maximum possible height. This is the secret of human effort. जो हम कर सकते हैं उससे थोड़ा कम करते हैं हम लोग। बहुत छोटे बच्चे होंगे तो वो बहुत enthusiastically पूरा उठा देंगे। But most of us, by the time we are grown up, we always do less than what we can do. अपने वर्क में, अपने स्टडी में, अपने प्ले में, अपने रिलेशनशिप्स में, अपने all kinds and spiritual practices, we are always doing a little less. We know honestly, if you ask yourself, we can do a little better. Little better we can do. This is our psychology. And then he told the students, ये आप याद रखो, head, heart and hand. Every day, tell yourself, I can study, think, analyze a little better today. Analyze, memorize, everything, little better today. I can feel a little more for my classmates, my teachers, my parents, the workers in the school, little more feeling for them. And hands, I can work a little better, I can play a little better today. Little better, कितना? इतना सा better मैं कर सकता हूँ.
इसका तो लिमिट है, you can't raise your hands continuously, but thinking, feeling and work, no limit. You can become better and better throughout your life. So उतना ही बोल के वो चले गए. I still remember 20-25 years later. I think you will also not forget. This is न्यूनतम से शुरू करो और सरलतम का अभ्यास करो. Same thing. Don't start with something very difficult. Don't bite more than you can chew. So this is pay as complete attention to whatever you're doing at all the time. Make a habit of it. This is focus. And that meaning of that cobra. Intense focus, hold it, cut off everything else. Karke dekho. And one more thing I can add, something I read in modern positive psychology, work related. They say work in intense bursts of 25 to 30 minutes. उसके बाद 5-10 मिनट रिलैक्स कर दो, if you feel like. Then come back for 25 to 30 minutes. Instead of 1 hour ऐसे ढीला ढीला चल रहा है, उससे ज़्यादा आप 20-25 मिनट इंटेंस काम करो, ऐसे फोकस and let it go. इधर उधर देखो, थोड़ा घूम के आ जाओ, and then again work. That works better. This bursts of concentrated activity. All right. I think we will go and take a few more questions. I said whatever I wanted to in this. What was the word? Ekagrata. पहला word क्या था? Shraddha. This is ekagrata. Good. You have got focus. You remember. All right. Let's take some from the back. We have not taken anything from the back. एकदम वहाँ पर जो dark shirt पहने हुए हैं, who's raised his hand? Is you. I'm talking to you. I'm talking to you. Yes. Yes. आपसे. Give him the microphone. Tell us your name and ask the question. Namaskar, Swamiji. My name is Shraddha from Vedanta Society. Swamiji, I would like to ask, there are basically two purposes in life. One is do something for yourself and do something for others, like the motto of the Ramakrishna mission, so these two purposes should be pursued simultaneously, or should we focus on the self first and the society afterwards? And do we have a right to work with the society, change the society, if we ourselves don't do the same thing that we want others to do? So how should we pursue these two missions in our life? Very good question. Doing something for yourself and doing something for others. And as he nicely put it, आपका रामकृष्ण मिशन का आप देखो slogan, the motto of the Ramakrishna mission, that also Swami Vivekananda gave. आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च. For your own liberation, अपना मुक्ति के लिए. ये सब जो साधना करते हैं, जो साधक throughout the ages, what are they doing it for? मोक्ष के लिए, निर्वाण के लिए, मुक्ति के लिए, for yourself. But च जो संस्कृत में means and, welfare of others, जगत हिताय च, जगत की हित के लिए. Notice ये and is very interesting. कोई तो कह सकता था कि आप गेरुआधारी सन्यासी हैं, आप अपनी मुक्ति के लिए कीजिए बस. कोई एक बार हम हिमालय में घूम रहे थे और एक जगह, एक हर्षिल बोल के जगह है, गंगोत्री से थोड़ा पहले है, उसके ऊपर एक पहाड़ पे 9000 फीट करीब है, उधर दोपहर में एक छोटा सा गांव है, उधर से भिक्षा करके एक पत्थर चट्टान पर हम बैठ के ध्यान कर रहे थे. एंड आई वाज जस्ट सीइंग दिस माउंटेन्स ऑल अराउंड एंड आई वाज थिंकिंग यही तो अच्छा है, यहाँ पर रह जाते हैं, ध्यान करते हैं, वेदांत की चर्चा करते हैं. अब क्या फिर ये महाराज का मिशन में आके वापस स्कूल चलाओ, अब तब एक कॉलेज के हम प्रिंसिपल थे, कॉलेज चलाओ, व्हाई डू ऑल दैट, व्हाई नॉट स्टे हियर. और वहाँ गांव वाले भी हमको बताए थे कि दे वुड से बाबा जी इधर आ जाइए, इधर एक शिव मंदिर है, आप इधर रह जाओ, हम लोग आपका खाना पहुंचा देंगे, आप अपने मन में बम बम करते रहिए, मजे में रहिए. So why not? Then I realized that kind of private spirituality is not very spiritual. बहुत दूर नहीं जाता है वो. मैंने देखा कई दूसरे सन्यासियों को, वो लोग भी वैसे ही सोचे होंगे, बहुत जल्द क्या हो जाता है, एक तरह का भिखारी का जीवन हो जाता है. आप अगर ध्यान लगा के समाधिस्थ हो सको, very few people can do it. But what are you doing with the rest of your life? So private spirituality is not very spiritual. Atmano mokshartham jagat hitaya cha.
अपने मोक्ष के लिए और जगत के हित के लिए। आप देखो, गो बैक एंशिएंट टाइम्स, पूरा गीता का सारांश, व्हाट डिड श्री कृष्ण टेल अर्जुन? ही सेड माम अनुस्मर युध्य च, हमें याद रखो, यानी भगवान श्री कृष्ण, भगवान को याद रखो और युद्ध करो। देखो फिर वही च, एंड कह सकते थे तुम आप गीता सुन ले हो, अब आप कृष्ण भजन करो और कुछ नहीं, लड़ाई नहीं करना है, वो कौरव को हम लिपटा लेंगे। या ये कह सकते थे, क्योंकि अर्जुन का क्वेश्चन क्या था कि मैं लड़ाई करूं या नहीं करूं, दैट वाज हिज क्वेश्चन। वो ना भक्ति के बारे में पूछे थे, ना ज्ञान के बारे में, ना कर्म के बारे में, कुछ नहीं पूछे थे। वो कर्म का थोड़ा प्रश्न था, ये करूं या वो करूं, कुछ व्हाट शुड आई डू। श्री कृष्ण पूरा 18 चैप्टर्स बता दिए उनको। तो फिर श्री कृष्ण कह रहे हैं दोनों करना है आपको। आपको लग रहा है ना कि वेदांत सच है, मुक्ति लाभ करना चाहिए, स्पिरिचुअल होना है। अर्जुन बोल रहे हैं हाँ लग रहा है, अब तो आप कन्विंस्ड, आई एम सोल्ड। तो अब ये क्या करें? आपको वो भी करना है, ये भी करना है। इससे आप भाग के स्पिरिचुअल नहीं हो सकते। आप इससे अगर भाग जाओगे तो आप जहां जाओगे, आप चलो छोड़ दिए कुरुक्षेत्र, चले गए आप गंगोत्री में ध्यान करने बैठे, पता है क्या होगा वहां? क्या होगा? अर्जुन सोच रहे हैं क्या हो सकता है, क्या होगा? वहां पर बैठ के आप सोचोगे वो बदमाश दुर्योधन, मौका था उसको ऐसा देते ना उसको, और मेरा भैया बेचारे युधिष्ठिर पता नहीं अब क्या कर रहे हैं। आप अपने भैया के बारे में सोचोगे, आप अपने दुश्मन के बारे में सोचोगे, वो ध्यान के नाम पर वहां बैठ के मिथ्याचार होगा। इंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण मिथ्याचार सोच्यते। ध्यान लगा के बैठा है लेकिन जगत के बारे में सोच रहा है, उसको हिपोक्रिट कहते हैं। और आप बन जाओगे हिपोक्रिट, बिकॉज योर टेंडेंसीज आर देयर इन द माइंड, सो यू हैव टू वर्क इट आउट। आपका जो कर्म क्षेत्र दिया गया है कहीं पर भी, वॉट एवर इट मे बी, इन द फैमिली, इट मे बी इन कुरुक्षेत्र, इट मे बी इन योर ऑफिस। अच्छा एक चीज आपको बता देते हैं, रिकॉर्डिंग हो रहा है फिर भी चलो जो भी है। हम हार्वर्ड में बैठे थे, बहुत वेल नोन पर्सन, यू ऑल नो, नोबेल प्राइज विनर प्रोफेसर अमर्त्य सेन हैं, उनके क्लास में बैठे थे। एंड ही वाज वेरी नाइस, ही अलाउड मी टू सिट इन हिज क्लास। बहुत अच्छी क्लास थी, एथिक्स पर, और बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। आई वॉज रेडी टू बी बोर्ड, 80 ईयर्स एज हो गया है, वर्ड्स आर लिटिल यू नो, लेकिन जब हम पास में बैठ के सुनते थे, आई वॉज रियली चार्म्ड। कितना अच्छा पढ़ाते हैं, वास्ट रेंज ऑफ नॉलेज। जो बोलते थे उससे हमको बहुत ज़्यादा एग्रीमेंट नहीं है, बट एनीवे। तो एक बार बोल रहे हैं कि आई डोंट नो हाउ महात्मा गांधी गॉट हिज डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन वायलेंस फ्रॉम अ बुक लाइक द भगवद गीता, विच इज़ अ बुक अबाउट वॉर। गीता तो लड़ाई की एडवाइस देता है, वहाँ से कैसे महात्मा गांधी अपना अहिंसा की डॉक्ट्रिन लेके आए, हमको पता नहीं है। तो ये पुरानी प्रश्न है, वेरी इजीली आंसर्ड, महात्मा गांधी हिमसेल्फ हैज आंसर्ड। सी इट्स अ कॉमन मिस्टेक। गीता इज नॉट अ बुक अबाउट वॉर। कौरव और पांडव में युद्ध हुआ था, कब हुआ था, उससे हम लोगों को क्या लेना देना? आपको क्या लेना देना है, हमको क्या लेना देना है? तो हजारों साल से हिंदू क्यों पढ़ रहे हैं गीता को? किसको लड़ाई करना है? कौन जा रहा है तीर धनुष लेके कुरुक्षेत्र में लड़ाई करने? सो अगर लड़ाई के बारे में है तो हम लोगों को क्या दिलचस्पी हो सकती है गीता से? लेकिन फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स हिंदूज, इंक्लूडिंग मंक्स, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, हमारे मधुसूदन सरस्वती, श्रीधर स्वामी, कितने कितने लोग गीता पर कमेंट्री लिखे, पढ़े, वो अपना जीवन का फिलॉसफी बना लिए। एक दिन भी कोई, वो लोग एक मच्छर को भी नहीं मारेंगे, लड़ाई तो दूर की बात। तो लड़ाई से कोई संपर्क नहीं है। It is our internal battle with our own, internal enemies and passions. It is our battle in life. वो कुरुक्षेत्र वाली लड़ाई नहीं है। आपके रसोई घर में, ऑफिस में, जीवन में जो संग्राम है, जिसको करके हम लोग स्पिरिचुअल बन सकते हैं, मुक्ति लाभ हासिल कर सकते हैं, उसी लड़ाई के बारे में है वो। अब पूरी बुक में देखो, लड़ाई की, युद्ध के बारे में कितने बार बोले? बहुत कम। ज्यादातर भक्ति के बारे में, ज्ञान के बारे में, ध्यान के बारे में, निष्काम कर्म के बारे में बोले हैं। It's just see Gita, the text, 700 shlokas. How much it is about war? Very little. वो क्लास में, हार्वर्ड में भगवत गीता पढ़ाई जा रही है। तो हार्वर्ड कैनेडी स्कूल से आए हैं, गवर्नमेंट जो पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस, वहाँ आके पूछ रहे हैं तो व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ वॉर इन गीता? तो हमने उनको थोड़ा सा डांटा क्लास में ही कि आप ये गलत कर रहे हैं।
आपको इंटरेस्ट है गवर्नमेंट में, आपको इंटरेस्ट है वॉर में, तो गीता इज नॉट द बुक फॉर यू. गीता इज अ मोक्ष, गीता मोक्ष शास्त्र है. उसका सेटिंग महाभारत में है, लेकिन उसका टीचिंग इज अबाउट स्पिरिचुअलिटी एंड मोक्ष. इट इज अबाउट भक्ति, ज्ञान, कर्म एंड ध्यान, मेडिटेशन. और ये हम आज नहीं बोल रहे हैं. यू लुक एट ऑल द ट्रेडिशनल कमेंट्रीज ऑफ द भगवद गीता, शंकराचार्य के कमेंट्री, रामानुजाचार्य के कमेंट्री, मध्वाचार्य के कमेंट्री, सो मेनी क्लासिकल कमेंट्रीज फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1000 years. एक बार भी किसी ने किसी को ये प्रश्न नहीं आया ये तो युद्ध की बुक है, हमें इस पर क्यों कमेंट्री लिख रहे हैं. वो लोग जानते थे युद्ध की बुक नहीं है. ये प्रश्न कभी उनके मन में नहीं आया जो आप हार्वर्ड में बैठ कर प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये फंडामेंटल डिफरेंस पता नहीं है कि मोक्ष शास्त्र अलग है, धर्म शास्त्र अलग है, अर्थशास्त्र अलग है, काम शास्त्र अलग है. आपको जो प्रश्न है ये आप जाइए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पढ़िए, यू विल गेट आंसर टू योर क्वेश्चन. तब प्रोफेसर बोल रहे हैं हाँ हम लोग को ऐसा लग रहा था कि गीता में हम लोग जो प्रश्न लेके आ रहे हैं उसका कोई आंसर नहीं मिल रहा है, जो प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं उसका आंसर मिल रहा है उसमें से, बिकॉज योर आइडिया इज डिफरेंट. योर गीता इज स्टडीड बाय दोज हु वांट मोक्ष, मुक्ति. तो देखो वहां पर भी कहा गया है माम अनुस्मर युद्ध च, लड़ाई करो और ईश्वर पर नजर रखो, ध्यान रखो, ईश्वर को पकड़ के रखो, अपना ड्यूटी करो, डू योर ड्यूटी इन लाइफ. वो लड़ाई भी हो या जो भी काम हो. और लड़ाई में एक वार में वो सेटिंग इसलिए दिया गया है कि हमको लगता है इफ स्पिरिचुअलिटी कैन बी प्रैक्टिस्ड इन द वर्स्ट सर्कमस्टांस विच इज वार, ये सबसे वर्स्ट घिनौना सर्कमस्टांस है, उसमें भी अगर कोई स्पिरिचुअल हो सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, तो हमारे जीवन में हम और कितना ज्यादा, हाउ मच मोर वी कैन प्रैक्टिस. वी कैन नॉट हैव एक्सक्यूजेस. हम बहुत व्यस्त हैं, आप साधु सन्यासी हैं, आपके लिए है लेकिन हमारे लिए नहीं है. अगर अर्जुन के लिए है वार, कुरुक्षेत्र बैटल में, देन इट्स फॉर एवरीबडी. Our situation is not more difficult than that, more or worse than that. It's a worse situation. बाद में देखिए बाइबल में, तो वो लोग तो सब क्रिश्चियन होने से पहले सब यहूदी थे. तो ज्यूइश रिलीजन में बहुत कमांडमेंट्स, हम लोग सुने हैं 10 कमांडमेंट्स के बारे में. बट इफ यू आस्क अ ज्यूइश रबाई, जो ज्यूइश टीचर हैं, उनसे पूछोगे तो देखोगे आप जुडाइज्म में, यहूदी धर्म में करीब 550 कमांडमेंट है. नॉट ओनली 10, 530 or something little more than that. तो जाहिर है जीसस को पूछ रहे हैं वहाँ वो लोग पूछ रहे हैं विच इज द ग्रेटेस्ट कमांडमेंट. ये सब में से सबसे इंपॉर्टेंट एक बताओ, उसको हम पालन करेंगे. कौन पालन करेगा 550? तो जीसस सेज लव द लॉर्ड दाई गॉड विथ ऑल दाई हार्ट एंड ऑल दाई माइट. कितना सुंदर बात है. अपने प्रभु को, ईश्वर को विथ ऑल योर हार्ट, विथ ऑल योर माइट लव गॉड. अच्छा ठीक है, हो गया. देन ही सेड एंड दूसरा, फिर से सेकंड, लव दाई नेबर. दूसरों को भी, दूसरों से भी प्रेम करो, अपने पड़ोसी से प्रेम करो, यानी दोज हु आर नियर यू, यू लव देम. देखो फिर से वही एंड, माम अनुस्मर युद्ध च, हमें याद रखो और लड़ाई करो. यहां पर कह रहे हैं कि ईश्वर से प्रेम करो और अपने पड़ोसियों से प्रेम करो. और एंड इज अगेन देयर. स्वामी विवेकानंद कहते हैं आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, एंड ट्राई फॉर योर ओन लिबरेशन, साधना करो, और एंड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स. देखो वही एंड गीता के जमाने में, बाइबल में आज विवेकानंद कह रहे हैं. सो योर क्वेश्चन इज दैट यस, बोथ हैव टू बी डन एट द सेम टाइम. एक साधु से, मंक इन आवर ऑर्डर, वो भी बहुत बड़ी नौकरी करते थे, सिलिकॉन वैली में ओरेकल में काम करते थे. वो सब छोड़ छाड़ के सन्यासी बन गए. उनसे बात हो रही थी तो हम बोल रहे थे कि देखिए हमको ये जो जन सेवा में, सोशल सर्विस में इतना इंटरेस्ट नहीं था. माई इंटरेस्ट वॉज ऑलवेज इन वेदांत, कि कैसे ईश्वर लाभ हो सकता है, कैसे ज्ञान हो सकता है. लेकिन जितना मोर आई एम स्पेंडिंग टाइम एज अ मंक, द मोर आई एम बिगिनिंग टू रियलाइज दैट जगत हिताय के बगैर वो आत्मनो मोक्षार्थम भी नहीं होता है. यू हैव टू कीप बोथ. तो दैट मंक सेड टू मी, अच्छा आप ऐसे सोचते थे? आई सेड हाँ, आप क्या सोचते थे? सो ही सेड I like that jagat hitaya. मेरा लाइफ, I will give my life to for the welfare of others. ये हमको बहुत अच्छा लगता था. और ये जो बोल रहे हैं मोक्षार्थम, ये मोक्ष क्या होता है, कौन सी बला है, पता नहीं, लेकिन ठीक है वो रहने दो उसको, हम जगत हित में काम करेंगे. फिर धीरे धीरे एज टाइम वेंट बाय आई रियलाइज अनलेस आई डू स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, अनलेस आई एम स्पिरिचुअल, आई रियली कैनॉट डू एनी गुड टू अदर्स. बहुत जल्दी हम सेल्फ सीकिंग, स्वार्थी बन जाएंगे.
तो दोनों चाहिए. देखो, both of us, two monks, they came from two sides. आत्मनो मोक्षार्थम से और से मैं आ रहा हूं, हमको पता चला कि जगत हिताय जरूरी है फॉर स्पिरिचुअलिटी. वो जगत हिताय की ओर से आ रहे हैं, उनको पता चला स्पिरिचुअलिटी जरूरी है फॉर वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड. तो दोनों एक साथ चलना चाहिए. ओके, वन मोर क्वेश्चन हियर. ओके, द यंग लेडी हियर, इधर जो, प्लीज स्टैंड अप, they'll give you the mic. Tell us your name and you can ask the question. Namaste, Swamiji. Firstly, it's such an honor to be here. It's such a surreal moment for me. My name is Sahana, and I'm currently studying, doing my fellowship at Ashoka University. So I have two questions. The first question is on Karma Yoga. In one of your videos, you had mentioned that the key to do Karma Yoga is disinterested work and not uninterested work. I'm still trying to wrap my head around it. I don't understand where else you can get your motivation from, if not for the result or the cause. So if you could kindly shed light. Right. And I had one more question. Yes. You had mentioned about the fourfold qualifications to gain, to realize your true nature, and you had mentioned something about Vyakulata. And my question is, when you have that yearning and when the ideal seems so far-fetched and so high, how do you deal with the conflict that goes on and the distance, the seeming distance between where you are and where you'd like to be? Correct. Two very good questions. What's your subject? I'm currently doing liberal arts, but I was an engineer before. Very good combination. So engineer thi, abhi liberal arts padh rahi hai, so there is a philosophy component to it also. Yeah. Is Professor Arindam Chakravarti also teaching you? Not me, but he is staying faculty. Right, I know. He gives classes there. Very good. ये करना चाहिए. I mean, one should cultivate. I'm seeing a lot more of this in India now. पहले नहीं था. There was this girl in our class at Harvard, an Indian girl. She was studying engineering in Northwestern. उसको मौका मिला एक कोर्स पढ़ने के लिए Harvard University में. तो she came and joined the Gita course and she was saying, Indian है, she was saying हमको बहुत डांट लग रही है पेरेंट्स से कि तुमको हार्वर्ड में पढ़ने का मौका मिला और तुम जाके पढ़ रही हो गीता पढ़ना था तो इधर रह जाते. So no, this is not good. One should cultivate this knowledge. So basically Sahana has asked two questions. Second one is about the ideal and the distance. The ideal is very far and I want to attain it, big distance. How do you motivate yourself? How do you face the cognitive dissonance, the distance you see? The first one was, where do you get motivation for Karma Yoga? For money I can work, for a degree I can work, even for social uplift of other people I can work. But without any motive, how can I do work? So that thing she quoted was, disinterested action, not uninterested action. I'm smiling because I know where it was said to me, here in Delhi. Swami Ananyanandaji, who was there in Mayavati and then in Hyderabad, I think, yes. He was visiting and he had a knee problem. So I was a new brahmachari, a very senior, wonderful Swami. So I would hold him and walk. He would, as a heavy built big man, hold my hand and walk to the temple. After Arati again, I would take him back to his room. So one day I thought I will ask a question. I asked what Sahana asked, I asked him. Swamiji, how can one work without any motive at all? And he was about to enter his room. He just looked at me and he said, remember, disinterested action, my boy, not uninterested action. Uninterested, this is the two words in English. Uninterested क्या होता है? हमको तो कुछ मिलने वाला नहीं है, हम तो निष्काम कर्म कर रहे हैं, तो जैसे तैसे कर दो. वो निष्काम कर्म कैसे करना है तो कर देते हैं, बस कुछ मिलने वाला वैसे ही नहीं है तो क्या, why take some effort? Is uninterested, poor quality. जैसे तैसे काम कर देना. Disinterested means मेरा personal कोई gain उधर नहीं है. I have no particular personal motive for it. Others will gain. And I will do that action with the best possible attention, with the best possible care. लेकिन कैसे होगा? फिर भी, what Sahana is asking, no personal goal is there, then how can, or why should one do that action?
No, it's wrong to think that no personal goal is there. There is a goal, but it's not a worldly goal. The goal is spirituality. By this work, Shiva Jnana Jiva Seva, knowing Jivas to be God, to be Shiva, I am worshipping them. I am worshipping God through all the Jivas. It is my spiritual practice. By serving in this way, the Lord will be pleased with me. This is bhakti approach. Then there is the jnana approach, that Brahman exists in all beings, and through my action, I am worshipping God, or I am being connected to Brahman. I see God in all beings, in all actions. Brahmarpanam Brahma, that verse is there. In classical Advaita Vedanta, all this work is done for purification of the mind, chitta shuddhi. Without that purification of mind, one cannot realize Brahman. You asked a question about fourfold qualification after that. You see, they say fourfold qualification: Viveka, Vairagya, Shamadamadi, Shat Sampatti, Mumukshutvam cha. These fourfold qualifications are necessary for a student of Vedanta. And at a high level, they are necessary. How will you get these qualifications? By purity of mind. How will you get purity of mind? By Karma Yoga. Karma Yoga leads to Chitta Shuddhi, and in a Chitta Shuddhi, purification of mind leads to these fourfold qualifications. So to be qualified for Vedanta, to become ready for Brahma Jnana, one needs purification of mind. That comes from Karma Yoga. So then there is a motive. Why are you saying no motive? This motive is not to be counted among other motives. This desire is not to be counted among worldly desires. Sri Ramakrishna would say in a very humorous way in Bengali, Chini mishti moddhe, what is called sugar candy? Michri mishtir moddhe noy. This sweets, they generate acidity. Acid reflux. You have to be Bengali to understand that. Mishti khele acid hoy. So, and then, but jo michri hai, if you make sharbat out of mishri, that destroys, it's like an antacid. It actually destroys your acidity. Similarly, desire for God, desire for spirituality is not a worldly desire. It destroys all our worldly desires. That's why Sri Ramakrishna says, Karma Yoga ka desire, Chitta Shuddhi ka desire, Brahma Gyan ka desire. Ye desire nahi hai. It's a destruction of all worldly desires. Ye aapko mukt kar deta hai desire se. Second part of your question was, ye Brahma Gyan, Moksha, Nirvana, these are very far. How many have attained? And I think I cannot attain. Then how will I remain motivated to do this? It seems far off goal. Actually, this question was asked. There's one professor at Harvard University. He teaches philosophy there, Indian philosophy. And he asked, just as a sort of discussion, Swamiji, moksha, nirvana, these are very far, very few people attain it. So why should one be spiritual? जहाँ सक्सेस का चांस ही नहीं है या बहुत कम है, तो स्पिरिचुअलिटी में क्यों जाएं हम लोग? So I gave him two answers. He gave me a third answer. All three are very good answers. These are answers to your question. Why should we pursue spirituality if the goal is very far or very difficult? The two answers I gave him was, मोक्ष सबको नहीं मिलता है, it's not true. First answer, सबको मिलता है. Everybody will get moksha, nirvana, enlightenment, freedom. Everybody will get. It's your real nature. Who can prevent you from getting it? कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? That's a question I have an answer to you. Maybe this life, maybe the next life, maybe the life after that. Who knows? But success is guaranteed on this path. Everybody will get moksha. Sri Ramakrishna says, he gave a very nice example. In Kashi, is somebody from Banaras? Yes. In Banaras, he says it's the place of Ma Annapurna, she who gives food. Nobody goes hungry in the land of Ma Annapurna. Everybody will be fed. But some will get in the morning, some in the afternoon, some in the afternoon, some before sunset. लेकिन शाम होते होते तब तक सब लोग को खाना मिल जाएगा. Morning, sunset does not make much of a difference. He means, sunset means pralaya of the universe. How many lifetimes later? Lekin sabko, everybody will be fed. Everybody will become spiritual, become enlightened. So this is the first answer. It is guaranteed. 100% guaranteed. Money back. Second, once you have entered this path, you have tasted spirituality in some form. Bhakti ho, jnana ho, dhyan ho, karma yoga ka jo आनंद है, आपको और कुछ नहीं भाएगा. Nothing else will seem as good as this. Everything will seem less than this, Spiritual life will seem the best life possible. आप उसमें एक बार घुसोगे, you will never be able to give it up.
तो भक्त लोग, devotees sometimes say, इतना कष्ट है, कुछ लग नहीं रहा है कि स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हैं, then we say, छोड़ दीजिए, आश्रम आना बंद कर दीजिए, ध्यान भजन सब छोड़ दीजिए. नहीं वो कैसे कर सकते हैं महाराज, दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ, मैं बहुत दुखी हूँ लेकिन वो अच्छा है. सो नहीं छोड़ पा रहे. आई रिमेंबर माई सेल्फ व्हेन आई बिकेम अ मंक आफ्टर 1 week, कितना रेस्टलेस थे. 1 week आई वॉज टेलिंग अनदर ब्रह्मचारी, सन्यासी के पास जाने से तो डर लगता था, तो एक सीनियर ब्रह्मचारी महाराज से बोले कि महाराज किचू होच्छे ना, नथिंग इज हैपनिंग, कहीं ज्ञान ध्यान कुछ नहीं हो रहा है. तो ही गेव सच अ नाइस आंसर, आई रिमेंबर टिल टुडे. ही सेड ठीक है चले जाओ, घर वापस चले जाओ. नहीं ऐसा नहीं कर सकते हम. देन ही सेड सी, यू हैव बीन इन दैट हाउस फॉर 23 years ऑफ योर लाइफ. आप एक हफ्ता में बोल रहे हो, उसमें आप कभी सोच ही नहीं सकते आई हैव टू गो बैक टू दैट लाइफ. तो ये क्या कम प्रोग्रेस है? सो आई वॉज कन्विंस, अच्छा बहुत बढ़िया. सो दिस इज द सेकेंड आंसर. देयर इज नथिंग कंपेयर्ड एज वंडरफुल अ स्पिरिचुअल लाइफ. वी मस्ट ऑल स्टार्ट इट एंड होल्ड ऑन टू इट. Third, so I told that professor. That professor said, these are good answers, Swamiji, but they are little theoretical. I will give you a practical reason why people stick, why they come into spiritual life and why they stay there. And the answer he gave was beautiful. He said, मोक्ष निर्वाण ब्रह्मज्ञान बहुत दूर हो सकता है, but day to day the benefit people get from spiritual life, the peace they get, the purposefulness. मैं साधक हूँ, भगवान लाभ, ईश्वर दर्शन मेरा उद्देश्य लक्ष्य है. ये जो पर्पस है, हाई पर्पस, समथिंग दैट कैन लास्ट यू टिल द एंड ऑफ योर लाइफ, उसके बाद भी चलेगा वो जन्म जन्मांतर तक. दिस पर्पस, दिस मीनिंगफुलनेस, दिस पीस, दिस स्ट्रेंथ they get, that is why they keep coming, they keep going to ashram, to meditation, they stick to spiritual life. कितने बार मैंने सुना है. Just last year I was hearing this doctor, she comes to the Vedanta Society, Indian doctor, she works in the emergency room in New York, in Manhattan. She said, Swamiji, you cannot imagine, at the peak of COVID, 1,000 deaths per day in New York only. It was like a war zone. लेकिन बाहर के लोगों को पता नहीं, क्योंकि वो अंदर हो रहा है हॉस्पिटल के अंदर. एंड वी हैड टू फाइट, एंड सो मेनी नर्सेज एंड डॉक्टर्स वर डाइंग ऑल्सो. तब पता भी नहीं था व्हाट आर द प्रोटेक्शंस. दिस इज ओनली थिंग दैट सेव्ड मी. वन डॉक्टर, अमेरिकन लेडी, शी कमिटेड सुइसाइड. शी सेड ओनली थिंग दैट सेव्ड मी स्वामी जी वाज जो मंत्र दीक्षा मैं लिया हूँ, दैट आई प्रे टू श्री रामकृष्ण, मैं जप करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, दैट इज द ओनली थिंग दैट सेव्ड मी. मन की शांति, स्ट्रेंथ. सो दीज आर द 3 आंसर्स टू योर क्वेश्चन. क्यों पकड़ के रखे when goal is so far? No, it is not. It may be far, but it is guaranteed. Answer number 1. Second, this is the best thing in life, highest thing in life. Third, you will continuously get benefit, day-to-day benefit. Okay, let me take one more question. Someone from the very back, last, एकदम जो हाँ वहीं पर. Pranam Maharaj, this is Vibhor. Maharaj, I am a businessman, and I used to study for IIT before in my college days. Couldn't get through. So my question was on the Kagata part of the conversation. Now, Maharaj, we all try to, as you said, we can focus for 10 seconds, we can focus there more time. As I have gone through life, my question is that how do we find that constant inspiration to keep fighting for it? Like, I have tried my best to succeed in whatever, being a businessman or being a student at that time, but that inspiration keeps eluding. Constant inspiration, you keep getting it in bursts, but that constant thing to keep fighting for it for the, I understand what you are saying. ठीक एक ये बात, this is not his question, but जो IIT में I tried, I did not get through. See, I am also not an IIT student, or I am student also, but somebody was saying, an analyst here, the one problem with Indian society is because of tremendous competition. हमारे ज़माने में competition था, it's much more now. It's really difficult being a young person in India today. It's quite difficult. और हम जो देखें, at least 2-3 nations I have seen, USA, Canada or Australia, same category of youngster, boy or girl, has a much easier time.
study, job, everything is much easier because competition is much less. So, and another thing I've seen is that population, इधर लगता है ये इतना burden है, इतना बड़ी population है. But you see the power of Indian population when you go outside India. हर जगह there is a wonderful Indian community, highly successful, model minority. Everywhere Indians are liked and loved. एक जगह है, हम नहीं बताएंगे, वहाँ तो उतना नहीं है. वहाँ most criminals are from Indian community. ठीक है, वो अलग बात है, उसका कारण भी है, लेकिन हर जगह इन जनरल. सो वो पीछे से आप, हाँ निकलना है पीछे से. So population has an advantage also. If you go to these other countries, you see the power of Indian population. But this analyst told me, India is a very unforgiving society for young people. ये हमको अब पता चला है. देखो डिफरेंस ये है कि एक जगह हम सक्सीड नहीं किए, एवरीवन विल से ये तो बर्बाद हो गया और कुछ नहीं होने वाला लाइफ में. एक ईयर ड्रॉप आउट कर गए कॉलेज से. इट्स टेरेबल इन इंडिया. यू ड्रॉप्ड आउट. कहाँ निकल गए आपके दोस्त? और आप एक कॉलेज अब तो सक्सीड भी नहीं कर पाए, ड्रॉप आउट भी कर गए एक कॉलेज से. नेक्स्ट ईयर करेंगे, बट यू हैव लॉस्ट 1 ईयर, लॉस्ट 2 ईयर्स, तो हो गया खत्म आपका लाइफ. नो, दिस आई अप्रिशिएट इन दोज कंट्रीज. यूएसए में भी देखा है, फेलियर इज नॉट पनिश्ड. एक साल ड्रॉप आउट कर गया, एक जगह फेलियर हो गया, दूसरा बिजनेस चौपट हो गया, नो प्रॉब्लम. You start all over again, you have every chance of succeeding. And the people will completely forget your past. Nobody cares. So yeah, this attitude we should have in life. His question is, how do you keep inspired the fight for focus, for concentration? Answer is very simple. Answer is the joy that concentration gives. If I look upon it as a battle, हमको फोकस करना है, कितनी बोरिंग चीज़ है, एक जगह फोकस करना है, बाप रे सोशल मीडिया ऑफ करना है, फ़ोन ऑफ करनी है, टीवी नहीं देखनी है, ये बोरिंग किताब पढ़नी है, तब कभी इंस्पिरेशन नहीं मिलेगा. सो इंस्पिरेशन मिलेगी जब इट इज़ समथिंग आई लाइक एंड आई एन्जॉय इट. तो अच्छी चीज़ को एन्जॉय करना हम लोगों को हैबिट बनाना चाहिए. गुड थिंग्स कैन ऑल्सो बी वेरी एन्जॉयबल. कॉन्सेंट्रेशन इज़ वेरी एन्जॉयबल. फोकस इज़ वेरी एन्जॉयबल. That I told the students in that engineering college, they said 7-8 घंटा पढ़ना एक साथ कितनी बोरिंग होती होगी. नहीं, बोरिंग नहीं है. आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसीलिए बोरिंग है. If you don't distract yourself, you have no other choice. वो कोबरा की तरह cut off everything else and focus on that one thing, you will get satisfaction. अब देखो concentration से satisfaction मिलती है या नहीं? मिलती है. You study a book seriously for 1 or 2 or 3 hours. At the end of it, you will feel satisfied. For 1 or 2 or 3 hours, you browse internet here and there. At the end of it, you will feel disgusted with yourself. Why? Focus. You have constructively engaged your attention in something. So, usme se the joy you get, that leads to, you will keep on doing it. It will become a habit. इस पे पूरी book है, Flow. Mihai, it's a big name, Mihai Csikszentmihalyi. But the name of the book is Flow. Try to read it. It's one of the classics of modern positive psychology. There it says the best time of our life, optimal experiences in life come when the mind is concentrated. उसको वो flow experience कहते हैं. Every musician knows, जो तबला बजाता है, musician knows that कब एकदम जम रहा है, एकदम flow आ गया है. That's how he got the name Flow, from musicians. तबला बजा रहे हैं, वो ऑडियंस को पता चले नहीं चले, द वन हु इज प्लेइंग दैट पर्सन नोज फ्लो में आ गया. अभी एवरीथिंग इज परफेक्ट, एकदम बढ़िया चल रहा है. एंड वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लो इज टोटल एंगेजमेंट ऑफ माइंड. टोटल अटेंशन इज एंगेज देयर. उसमें देयर इज अ लॉट टू लर्न देयर. आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट बुक, बट बेसिकली माय पॉइंट इज focus, concentration, when you're doing it right, is an enjoyable state. And that enjoyment, that joy in focus, that higher sattvic joy, that will be the motivation for remaining focused. Swami Sarvapriyananda Maharaj, who is the president of our order now, many years ago when he used to teach us, we were brahmacharis, he would again and again say, not only the goal is ananda, the means also must be ananda. आपको आनंद लाभ करना है, ब्रह्म ज्ञान लाभ करना है, ईश्वर लाभ करना है, वो तो आनंद है ही, गुड. बट द मीन्स, योग, कर्म, ध्यान, ज्ञान, भक्ति, ये सब आनंद में होना चाहिए. इट मस्ट बी ब्लिसफुल टू वर्क फॉर अदर्स.
It must be blissful to worship God and sing and pray to God. It must be blissful to meditate calmly. It must be blissful to realize and inquire into मैं अहम ब्रह्मास्मि, इसमें आनंद होना चाहिए. ये जो आनंद है, it will carry you forward. अगर ये आनंद नहीं है, it cannot carry you. It will not sustain you. It will become a bitter struggle then. हार्वर्ड में टाल बेन शार बोल के एक साइकोलॉजिस्ट थे. When I went here already left, so I thought I would meet him and attend his course. उनका कोर्स सबसे फेवरेट कोर्स था स्टूडेंट्स में. क्या कोर्स है? हैप्पीनेस. हैप्पीनेस. He wrote a book about it also. Tal Ben Shahar. His basic idea is this. खाना, food, 4 types. एक matrix बनाया है, 4 types of food. One is, it is very tasty but unhealthy. Another one, just opposite, very healthy but tasteless. Somebody said to me, the more healthy the food is, more tasteless it is. खाने का मन नहीं करेगा, बोले बहुत अच्छा है आपके लिए, खाने का मन नहीं करेगा. Then third one, tasteless and unhealthy. सड़ा हुआ, पुराना, out of date, expiry किया हुआ, or not good, full of preservatives and tasteless and also unhealthy. The last one, tasty and healthy. And he says what we should aim for is tasty and healthy food. Healthy, so it's good for us, and tasty because you like to take it, it will be effortless. Similarly, he said in life, try to, it's not always possible, but try to make your activities, relationships, work, practices, spiritual practice, academic studying, exercise, all of that should be tasty and healthy, should be enjoyable and beneficial. Very good idea, simple idea. How popular his class was, I'll tell you. Normally, Harvard graduate level classes are what? 20 people, 15, 20 people sit there. Most classes were like that. His class was 500 people. Badi ordinary class, कोई lecture नहीं. Ordinary classes, you have to have the biggest auditorium there. So I think his class was tasty and healthy also. One more question, we've got time. Let's take it from the lady there, yeah. Oh, 2 ladies, okay, you will get your chance next. You tell us your name and ask the question. Namaste Maharaji. My name is Shubha Chandelier. I am from Delhi University and currently pursuing Sanskrit honors. Very good. So my question is, as we see here, we have lots of people who are attending this convention, and after this, they would go home and be very much attracted towards what happened here only. So the thing is that we see their life would be changed for days, maybe years, maybe whole life would be changed. Here we see one convention can change one's life. How about introducing this spirituality into the course that we have in our education system and in universities or colleges, so that we can pursue it every day or even regularly? Because this can change one's life in one day. So how about introducing it in one's education forever? I think that calls for applause. This is only answer is this. This is what is required. You heard this. Thank you very much for that. And people are trying. Foremost among them, revered Swami Shantatmananda Maharaj and his team here in Delhi Ramakrishna Mission. Did you hear about that? 5,000 plus schools, 1 million plus students. See, this is, there is a saying in management, in communication theory, as important as getting an idea is to get it from point A to point B. You may get an idea, but communicating that idea is equally important. And it should be scalable, not just one teacher with a few students sitting in the Himalaya, but scalable, 1 million students, 5 million, 10 million students. And as she said, from KG to PG. Dr. Radhakrishnan, Sarvapalli Radhakrishnan, I'm sorry to say, 1948, he had thought about it, and he had 1 chapter in his University Education Commission. What sort of syllabus should be there in the University of Free India? 1 whole chapter was on religious and moral education. There he argues, it is not against secular constitution
to teach the highest values of all religions to the students. We are not teaching religion. We are teaching values and spirituality. This is a different matter altogether. He gave syllabus, college syllabus, first year, second year, third year syllabus. The government in its wisdom at that time dropped that chapter completely. They did not implement any of that. Who accepts Radhakrishnan? Who respects Radhakrishnan? I was surprised. In Harvard Divinity School at Harvard University, there's a Center for Study of World Religions. When I entered that big picture of Dr. Radhakrishnan, he was President of India, visiting Harvard University at that time. They inaugurated, the Center for Study of World Religions was inaugurated by Dr. Sarvapriyananda Radhakrishnan. His recommendation was what she has just said, 1948 recommendation of Dr. Radhakrishnan. There should be full syllabus for what we call today value education, spiritual education, moral education for all students at all levels. The other lady? Yes, no, this lady who stood up, give her the microphone. My name is Pallavi Ghosh. I'm from Kolkata. Here I'm working in the institute in a research project. My question is that when we start giving concentration, full concentration, sometimes negative thoughts start coming in our minds. And we cannot cut off these thoughts. And it disturbs our work and it makes troubles. And then we need to do fighting with these thoughts that I need to focus. And these negative thoughts also come in my mind. Right. How do you deal with negative thoughts? This is a weakness of the mind. The mind always playing tricks. So one is, it will become pull up negative thoughts, hateful thoughts, bitter thoughts, unhappy thoughts, past memories. Mind is an instrument. You are not the mind. Instrument is like microphone, like computer. That's the mind. You are different from it. Don't let the mind misbehave. Mind is a good servant. It's a terrible master. If you let mind take charge of you, it will ruin your life. You should be in charge of the mind. In Kathopanishad, very nice analogy is given of chariot. So there is the chariot. The horses are the five senses. 5 horses are there, 5 senses. Seeing, hearing, smelling, tasting, touching. The roads, the 5 lanes are the 5 sense objects. What you see, what you hear, what you smell, what you taste, what you touch. The rein by which the horses are controlled, that is mind. The charioteer, driver, is intellect, buddhi. Who are you? You are the passenger. You have a goal to attain God realization, enlightenment, Brahmajnana, liberation. That chariot will take you to that goal where the senses are controlled and trained, the mind is focused. Clearly said, samanaska, mindful. Now mindful meditation is a big thing in the world, in USA. At that time, Kathopanishad, samanaska, controlled senses, focused mind, concentrated mind. And intellect, prajnanavan, vijnanavan. Intellect should be fully informed by Vedanta, yoga. Spiritual knowledge should be there in the intellect. Intellect knows, driver knows where he has to go. GPS well programmed. And steering, tight, focused. Steering ढीला है, घुमा रहे हो, गाड़ी नहीं घूम रहा है. Then it's very difficult. And horses or the wheels of the car, they are perfectly aligned. एक उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, then the crash will be there. So this is the model which is given in Kathopanishad. You are not the driver. You are not the reins of the horse. You are not the horse also. You are not the chariot. You are the passenger. Atma, consciousness, Sakshi. So that model you keep. Practically, mind is getting disturbed. All right, get up from that work. Engage yourself physically. Do some other work. Maybe go and talk to somebody. Maybe listen to some music. Divert yourself. Don't sit there with that churning mind. Break that pattern immediately. All right. Now, I will make a point in 2 minutes and then wrap up. The third point. Bhul gaye ho gaya. I have not forgotten. Seva. We have had 2 so far. First, Shraddha. कोई है उधर जिसको बहुत श्रद्धा है. Then second, Ekagrata, concentration. Third one is Seva. A very great philosophy of life.
Service as spirituality. Swami Ranganathananda ji, who was the 13th president of our order, used to say, what is spirituality? When I close my eyes in meditation, I get peace within. When I open my eyes, my attitude is, what can I do for you? Close my eyes, I get peace within. I open my eyes, what can I do for you? The philosophy of seva. We are so disturbed because when we close our eyes for meditation, Maharaj, all sorts of thoughts are there in my mind. I have no peace within. Open my eyes, not what I can do for you, what can I get from you? Just the opposite. Therefore, we don't have peace. That is not spiritual, that is worldly. Disturbed mind and asking for things from the world. In an old Christian classic, which Swami Vivekananda liked a lot, Imitation of Christ, written by a Christian monk nearly 1,000 years ago. There, that person who's written it has imagined that Jesus Christ is teaching the disciple. So this disciple asks, Lord, how will I get peace of mind? Man ki shanti kaise mile? And Jesus says 4 things. It's in the imagination of the writer. 4 things. If you want peace, practice 4 things. If you see these 4 things, we will realize why we don't get peace. We do opposite of that. First, always seek to have less rather than more. We do the opposite. More. Swami Vivekananda said, the West is trying to show how much a person can accumulate. India shows how a person can live happily with the minimum things. If you want peace, always seek to have less rather than more. Second, always seek to be last rather than first. All parents, सबको माथा में हाथ लग जाएगा. We are telling students, be first, be first. First means you do well in your studies and in your work, but do it for let others enjoy the privilege first. खाना है, दूसरों को पहले खा लेने दो. I will take the last part of it. We used to serve roti for the sadhus in the Pangat, where our main ashram is there. I would notice brahmacharis जो नए हैं वो लोग खा रहे हैं, तो कोई है रोटी के बाल्टी आती थी, देख रहे कौन सा अच्छा ये, और कोई है जो सबको दिया, बाकी जो रूखा सूखा जला हुआ पड़ा है उसको अपने प्लेट में ले लेता ऑटोमेटिकली, डेलिबरेटली. जो वर्स्ट है, लेट मी हैव इट, इट इज एडिबल आफ्टर ऑल, व्हाट्स रॉन्ग विथ इट. और जो अच्छा है आप दूसरों को लेने दो. दैट्स अ मदर्स हार्ट. विच मदर विल से केक का एक पीस बाकी है, बच्चे घर वापस आ रहे हैं स्कूल से, पहले हम खा लेते हैं इसको, वो लोग आएंगे तो. नो मदर विल नेवर से दैट. शी गेट्स मच, शी डज नॉट फील इट सैक्रिफाइस, शी गेट्स जॉय इफ द चिल्ड्रन ईट. You will get joy if you give to others. Be last rather than first. Third one, very difficult, to obey the will of another rather than your own will. जो झगड़ा का मूल कारण है, I know better, this is what I want, this is what should happen. 19-20 फर्क होता है in most of these cases. Let other person's will be done. मान लेते हैं, दूसरा जो बोल रहा है मान लेते हैं, in family, in job, to some extent. Then finally, last one, in all things, recognize and accept the will of God. हर चीज में recognize and accept the will of God. So 4 things to get peace of mind. This is the philosophy of seva, that I will do things for others. It is that I have a power to do something for others. पैसा है तो दूसरों को दे सकते हैं. If I've got time and energy, I can work for others. I have a skill, I can help others with it. If nothing else, a smile, a little bit of encouragement, a few nice words for others. Not glum face, dark face. Swami Vivekananda said, if you have sorrowful face, gloomy face, don't go outside the door. It's a disease, like COVID. Don't spread it. Mask pehno. He says, stay inside the room. So, this philosophy of service, that it's a great power, I should do something for others. Instead of spending my life trying to get from society, get from others, transform it into a sense of giving. Now when will I do that? Kuch milega tab to na denge. No. It's an attitude. I have seen it in little students, and I have not seen it in some rich, accomplished person at the point of retirement still trying to get. So this is an attitude we can have. Whoever you are, wherever you are, no matter how terrible your circumstance, कुछ भी नहीं है, तब भी you are in the position of a giver, never in the position of asking. Philosophy of service, seva as a great philosophy in your life, as the ideal of life.
This much I wanted to say. These three things. See, even with faith in yourself, even with tremendous power of concentration, एक दानव बन सकता है, एक रावण बन सकता है. Ravan had full faith in himself. Ravan had tremendous concentration. But third one was not there. Everything for myself. मेरे लिए. तो रावण दानव बन गया. So the power of selfless service. Then you, तो मेरा क्या होगा उसमें? बहुत होगा. What you would have got by trying to get something for yourself, but you get 1,000 times, 10,000 times more than that you will get by having the philosophy of service. आपको चाहना नहीं है, आपको मिलेगा. Surely मिलेगा. There is no doubt. Nobody has ever suffered today, till today in life by having the philosophy of service in life. अपना life पे philosophy. आपको board लगा के NGO नहीं बनाना है. Not necessary. But you must be by nature the person who is available to others, relaxed and happy in yourself, and attitude is what can I do for you? Family में, job में, community में, nation में, ashram में. Good. I think we'll wrap up now. Thank you very much. It was a pleasure and an honor and privilege to speak to you. I think we are absolutely left spellbound and speechless. सबको मोहित कर दिया. मैं तो 3 घंटा कैसे निकल गया पता ही नहीं चल रहा है. मैं तो साधारण प्रोग्राम के अंदर 10-10 मिनट सब उठ के जाते हैं. Everybody is glued to their seat. I will not take much of your time, so already we are late. Just 2-3 very important observations. One is, see, the whole concept of rebuilding India, he handled from a totally different perspective. It's not so much the objective India, it is subjective. If the individuals, if the citizens become extraordinary, the country is going to be transformed automatically. So he did not address any particular issues which are normally discussed when India is to be improved or something is to be brought about. So completely from the individual's subjective point of view, if all these people, if all of our youngsters, all of our countrymen become like that, obviously India itself will be an extraordinary nation. So we are very deeply indebted to him for spending so much of time. He has spent so much of effort, and evening he has another program. So please, all of you stay in your seats by the time we leave then, because if you want again, you can come for the evening Vedanta class, and again you will get a chance to ask questions. And tomorrow you will get a chance to do pranam also at the end of the program. Now we see 2 other things. What Maharaj told you, is always a concept of lap to land. Whatever he told you, we have 2 wonderful opportunities to practice and develop. One is what he told about our flagship program. It's called the Awakened Citizen Program. So we need to create awakened citizens in this country. So those of you who are really ready, I find many brilliant youngsters have come. We just need, you can take a 2 years, we have a beautiful Vivekananda fellowship. You must be prepared to work in any part of the country. It was a very exciting offer. For that, through that you can really contribute to the regeneration of our motherland, because that program is directly addressing that issue. And all the components Maharaj talked about in various ways, they are there in that program. It's all, literally it's all there. Focus, Shraddha, it's all Seva, everything is part of that program, really, completely part of it. And then another thing is, in Delhi we run a youth forum, and there we take up a lot of youth issues and discuss every week. Every Sunday it's from 3 to 4:15. During COVID we are doing it online, now we would switch to offline mode. As many of you possible should come, so that we can plan, we can take many activities. Now straight away we have also taken an activity under that. Our Suraj Mishra, who beautifully coordinated this whole program, he has, of course, so many contributed, but he was kind of central figure. Suraj, you can get up, you can give a warm hand, because he did it so beautifully. Not only that, of course, he's a very vibrant, emotional youngster, but is really unselfish, I can tell you that much.
Now, we have initiated a program called Vivek Vidya. Now, how do we really practice this seva, unselfishness? This Vivek Vidya is, of course, he will inform all of you because we have all your emails. Ideas we are saying that throughout India now so much students are being completely robbed like anything. So many coaching institutions have come up. Now they say right from birth you enroll in various institutions. They were saying first after class 12, then after class 10, then class 6. Now they say right from birth you can join, so that your entire money they can take away from you. What we thought was, supposing we initiate a big group of resource persons who can teach the students free. It can be 1 hour, 2 hours, 3 hours, 1 day, 2 days, 3 days, all options. He has developed a form whereby you can fill in. So let us create a huge community of teachers, because you are all coming with that kind of an ideology. एक आदर्श की उसकी वजह से आप आ रहे हैं ना, आपकी काम की तरीका अलग होगा. And it will be a wonderful thing for those students to get in touch with you. So he will inform you about the details. So let us create a huge community of wonderful teachers, young teachers all over India. You will be part of this Vivek Vidya initiative. Through that, we are trying to reach a huge student community across the nation. I mean, it's just in a seed form. It's just now it has been given, it has given birth just now. So we have to take it a long way forward, but then it's a very good initiative. I thought one way where, without other commitment, but really everybody is busy. Every day some another is happening. This lot of student union, lot of other activities. People don't have time. So I thought this is one we can develop without any expenditure on your part. Only you have to give your time. So these are some of the initiatives. Once again, let us give a warm applause to Swami Sarvapriyananda for an amazingly enriching session, and we'll hear more and more from him. Of course, we have 2 more classes in the evening. All are welcome. Thank you. So please be seated for a few minutes. Thank you. Thank you, Maharaji, for sharing your knowledge, experience, and wisdom and guiding us on this path of progress. I'm sure we will all go home today with heads full of ideas to dwell on and thoughts to act upon. And we look forward to hearing more from Maharaji on several other occasions. Thank you all for your enthusiastic participation. You may write to us on our email if you have any queries. We have also arranged a small refreshment for all of you. Kindly collect it while exiting the auditorium.